Hello and namaskar. Good evening, everybody. Good evening. मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं आप लोगों के साथ आज मोक्षपाठ पे बात करूंगी. नमस्ते प्रीति जी. एवरीबडी प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए बिकॉज अगर मैं आप लोगों को देख नहीं पाऊंगी तो कनेक्ट कैसे करूंगी. थैंक यू सो मच शशि जी, पल्लवी जी, जिग्ना जी, नीरू जी. कम ऑन, थैंक यू एवरीबडी. सो आप में से आज जो पहली बार हमको ज्वाइन कर रहे हैं, a very warm welcome to you. और जो लोग पहले भी आ चुके हैं मेरे पास, thank you all for coming once again. मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं एक प्लेटफॉर्म चलाती हूँ जिसका नाम है ट्रांसेंडिंग बिलीव्स. ट्रांसेंडिंग बिलीव्स विश्वास रखता है सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ लर्निंग में. इसका एक ही बिलीफ है, एक ही फॉर्मेट है कि हम सब में वो खूबी है, वो खास बात है कि हम अपनी जिंदगी में बड़े काम कर सकें. सिर्फ जरूरत है तो एक सही दिशा की, एक सही गाइडेंस की और शायद सही टेक्निक की. सो इसी के बेसिस पर हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब सेल्फ ग्रोथ पे होते हैं, सेल्फ हीलिंग पे होते हैं, ताकि पहले आप अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करें, बेटर करें और फिर अपनी फैमिली की लाइव्स में इम्प्रूवमेंट लाएं एंड देन स्लोली एंड स्टेडली दुनिया में जाकर कुछ क्रिएट कर पाए. सो फर्स्ट वन क्वेश्चन एवरीवन, आप में से किसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती? ऐसा कोई है who does not know हिंदी at all? If it is so, chat में मुझे लिख के बताओ please that you don't know how to speak हिंदी, so that मैं वही लैंग्वेज यूज करूंगी जिसमें सब कंफर्टेबल होंगे. Okay. Yes. ना अब आप लोग चैट में मेरे को मैसेज कर सकते हैं. Is there anybody who doesn't know हिंदी, जिसको हिंदी नहीं आती? Krishna, is there a problem with my voice? No, ma'am. Okay. So Pushpa ji and Manjul ji, आप अपना ऑडियो आउटपुट सेट करें प्लीज. क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे. Okay, Manjul ji, do you know how to? You don't know Hindi at all? मैम अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो मंजुल जी, आपको हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी? यू डोंट नो एनी हिंदी? ओके, दे नो. सो गाइस, प्रीति जी, शशि जी एंड पल्लवी जी, मैं आप लोगों को देख सकती हूँ. एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? परफेक्ट, थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू सो मच. चलिए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि मैं आप लोगों से जब बात करूँ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए बैकग्राउंड से. So, किस किस को यहाँ पे मोक्षपाठ के बारे में कुछ पता है? Who all knows मोक्षपाठ क्या है? Is there anybody? Yes, सपना knows about it. Good. और किसी को पता है मोक्षपाठ के बारे में? No. Okay, Payal also knows. Good. I know Hindi, English, Japanese and Sanskrit. यार प्रीति, मुझे भी जापानीज सिखा दो, बाकी तो मुझे आता है. Okay, प्रीति जी, मुझे प्लीज जापानीज आपसे सीखना पड़ेगा. Very good. So little bit I do. Okay guys, so let's talk about, पहले हम देखते हैं कि मोक्षपाठ दिखता कैसा है. So मोक्षपाठ जो है एक ancient, कहा जाता है इसको ancient Vedic snakes and ladder. Ancient Vedic snakes and ladder का ये जो बोर्ड है, ये मॉडर्न वर्जन में कुछ ऐसा लगता है देखने में. पुराना वर्जन तो इसका ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही गुम हो गया था, जब वो स्नेक्स एंड लैडर को या फिर मोक्षपाठ को स्नेक्स एंड लैडर बनाकर ब्रिटेन लेके गए थे. उस टाइम पर ना हमने ये गेम खो दिया था, इसका यूनिकनेस खो दी थी. क्यों ये गेम यूज होती है वो खो दिया था, और सिर्फ बचा क्या था पता है आपको? एक गेम जो वापस ब्रिटिशर्स ने लाकर हमको दिया एंड कहा दैट भाई स्नेक्स एंड लैडर की तरह खेलो. बट वाकई में अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे तो जो ये बोर्ड है इसमें 72 स्क्वायर्स होते हैं, 72 बॉक्सेस होते हैं. हर बॉक्स में एक का एक नाम होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. और ये जो मीनिंग होता है इसके थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और
हमें ये पता चलता है कि जिंदगी में हम कहाँ फंस रहे हैं, क्या करके हम अब बाहर निकल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए इसको यहाँ से बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए। देखा जाए तो मोक्षपाठ जो है ये 13th सेंचुरी में महर्षि ज्ञानदेव ने क्रिएट किया था, और इसका बेसिस जो था वो था ज्ञानदेव जी के शिष्यों को एक सरल तरीके से, इजी तरह से वेदों का ज्ञान देने का। अब वैदिक सोसाइटी जो होनी चाहिए थी और जो मॉडर्न सोसाइटी है, दैट इज नॉट गोइंग टू मैच। क्यों? वैदिक सोसाइटी के नियम दूसरे थे। वैदिक सोसाइटी बिलीव्ड इन डिफरेंट थिंग्स, whereas modern society believes in many different things, many different things, and उसके हिसाब से क्या होता है, वहां पर मैच नहीं होता, मैच ऑफ व्हाट वी वांट। सो कैसे इजीली लोगों को समझाया जाए कि वेदों का ज्ञान है क्या, हाउ टू एक्सप्लेन व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज धर्म अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। अब इसके अंदर ना रिलीजन कहीं नहीं आता, बिकॉज अगर आप शास्त्र देखें, बुक्स देखें कहीं की भी, so whatever Islam says, Hinduism also has the same base, Christianity has the same base, Sikhism has the same base. नाम बदल गए, जमाने बदल गए, तरीका बोलने का बदल गया, but overall if you will see one thing, you will see that we all follow from the same method. There is one God, there is one divine. एक ही ईश्वर है और उन्हीं के नाम तक, उन्हीं के रास्ते तक हमें पहुंचना है। So with this perspective, Mokshapatta was created. मोक्षपाठ का मतलब है एक ऐसा बोर्ड या एक ऐसा पाथ जो आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाए। इंग्लिश में कहेंगे द पाथ टुवर्ड्स निर्वाणा कैन बी कॉल्ड मोक्षपाठ। मोक्ष मतलब निर्वाणा, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, कर्म और धर्म के साइकिल से, जीवन और मृत्यु के साइकिल से फ्रीडम। एंड पट का मतलब है बोर्ड या फिर पाथ जिसपे चलकर हमें मोक्ष मिल सकता है। By walking on this path, we can get moksha. So this concept was created as a game. ये concept पहले गेम की तरह क्रिएट होता था, एंड इसमें डाइस चली जाती थी और गोटी आगे बढ़ती थी। जैसे जैसे एक बच्चा या एक बाल शिष्य जो होते थे ऋषियों के, they would come on a particular box that would talk about their aspect in life, their method of thinking, their method of behaving उस point of time. However, today we use Mokshapatta as a form of guidance, as a divination modality. एक ऐसा मेथड जो कि हमारी जिंदगी में हमारी मदद करता है to get answers, to understand our life, अपने कर्म समझने में, to understand कि मेरा karmic pattern क्या है, what is my karmic pattern and where am I stuck. और ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ जब हम साथ चलते हैं, सो वेदों का ज्ञान, वेदों की विजडम, द विजडम ऑफ द वेदास विल वॉक विद यू एंड इट विल हेल्प यू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो बात करते हैं थोड़ी सी और हिस्ट्री के बारे में, मोक्षपाठ की इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ मोक्षपाठ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल डिफरेंट modalities of divination like tarot, astrology. Moving forward, हम मोक्षपाठ प्रोग्राम की बात करेंगे, एंड देन लास्ट में फॉर हाफ एन आवर आई विल डू अ क्वेश्चन आंसर रीडिंग. इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, यू कैन आस्क, एवरीबडी कैन जस्ट आस्क वन क्वेश्चन एंड मैं बोर्ड के थ्रू आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगी. आई विल आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. ठीक है? सो वी विल ट्राई एंड स्पेंड मैक्सिमम टाइम पॉसिबल ऑन आंसरिंग योर क्वेश्चंस rather than discussing, so that all of you can see how Mokshapatta can create magic in your lives. So Mokshapatta जो है, इसके बहुत सारे नाम थे. It had many different names. लीला, ज्ञान चौसर, बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान चौपड़, of course Mokshapatta. लेकिन अगर इसको मैं सच में एक चीज मानूं तो मैं इसको मानूंगी something that helps you change your life, something that helps you grow as an individual. आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है मेरे पास, या फिर मैं अपनी बात भी करूं तो इवन फॉर माई सेल्फ, फ्रॉम द डे मोक्षपाठ हैज कम इनटू माय लाइफ, मोक्षपाठ मेरी जिंदगी में आया है, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, एंड इट हैज क्रिएटेड ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ग्रोथ फॉर मी. सबसे बड़ी चीज है, जब आप मोक्षपाठ यूज करते हो ना, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट
how can you improve? And उसका जो concept होता है एक एक box का, it will start filtering into your life, slowly making you question your decisions, your way of talking, your way of being. And without doing anything much, you will see that your life will change. And this is a byproduct. This is not something जो आप planned way में करोगे, ये हो जाएगा आपके साथ. सबके लिए ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है मोक्ष पाठ का, मेरा नहीं. बिकॉज जब आप मोक्ष पाठ को अपनी लाइफ में लाएंगे, दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन फॉर यू. मोक्ष पाठ में 72 बॉक्सेस हैं. These 72 boxes are talking about the कर्म and धर्म. कुकर्म यानी बैड कर्मा, सुकर्म यानी कि गुड कर्मा, वैसे ही अधर्म यानी कि रॉन्ग धर्म, एंड स्वधर्म या सुधर्म यानी कि अपना सही धर्म. Coming from those concepts, Mokshapatta is like a guiding light. What to do and where you go wrong. It can talk about past lives, it can talk about present lives, it can also talk about karmic patterns. अब अगर ये पूछोगे ना पास्ट लाइफ में मैं राजा रानी था, तो वो नहीं जवाब देने वाला है. वैसे वो दे सकता है, बट हम उसके लिए मोक्षपाठ नहीं यूज करते, बिकॉज व्हाई वेस्ट दैट एनर्जी. बट यस, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर पास्ट लाइफ पैटर्न्स? पिछले लाइफ टाइम्स के पैटर्न से आपको क्या रोक रहा है? व्हाट आर द कार्मिक पैटर्न्स दैट आर नॉट लेटिंग यू ग्रो? ऐसे आंसर्स आपको मोक्षपाठ से मिल सकते हैं. ईच ऑफ दीज 72 बॉक्सेस इज लाइक अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ये वो 72 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं इन विच वी हैव टू लिव. वी कांट स्किप देम. हम इन्हें स्किप नहीं कर सकते. वी हैव टू गो थ्रू देम, वी हैव टू मास्टर देम, एंड देन वी हैव टू ट्रांसेंड देम. मतलब इनको हमें जीना है, इन्हें मास्टर करना है. तो गुस्से को कंट्रोल करना या काबू में करना नहीं सीखना है. गुस्से को सही तरह से सही जगह यूज करना सीखना है, वेयर इट कैन बी प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ destructive for us. And from there we will master anger. हम anger को master करके आगे बढ़ सकते हैं अपनी जिंदगी में. This is the path which Mokshapatta takes us on. And सबसे बड़ी चीज देखी जाए तो हम because एक कार्मिक साइकिल में बंधे हैं, इसीलिए तो हम ये जिंदगी जी रहे हैं. अगर कर्म नहीं होते, डिजायर नहीं होती, तो कर्म नहीं होता. कर्म नहीं होती तो ये लाइफ बार बार लाइफ में आने का पंगा ही नहीं होता. राइट और रॉन्ग? राइट ना? सो कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, व्हाट टू डू टू मूव आउट ऑफ दिस साइकिल? व्हाई एम आई गेटिंग स्टक इन दिस साइकिल? दैट बिकम्स द कोर क्वेश्चन. बट सबसे बड़ी चीज जो मुझे इसकी लगती है, आप इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक. फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या सोच रहे हो, आप सैड हो या हैप्पी हो. When you ask a question to the board, the answer is given from the energy of the board. Board की अपनी एनर्जी आंसर देती है, आपकी एनर्जी में. जैसे क्या होता है, हम जब डाउजिंग करते हैं, कई बार हमारा अपना जो अपनी सोच होती है, अपने इमोशंस होते हैं, हमारे बिलीफ होते हैं, दे इफेक्ट आवर रीडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर रीडिंग. विद मोक्षपाठ वो चीज कम है. I'm a dowser also. I do dowsing. मैं एक tarot reader भी. Tarot. I know tarot. I don't practice it, but I know tarot. Then I also know numerology. Once again, मैं practice नहीं करती numerology professionally, but मुझे आती है. With all of these things, what I have seen is मोक्षपाठ आपको core तक ले जाएगा problem की, जड़ तक. Also, it talks about long-term patterns. छोटे-छोटे patterns नहीं. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं who are astrologers, tarot readers, and they have found a lot of value from मोक्षपाठ. वो ये कहते हैं जहां हम एस्ट्रोलॉजी को लेकर हंसते हैं, वहां हमें मोक्षपाठ से आंसर मिल जाते हैं सारे. सेम फॉर टैरो रीडर्स, सेम फॉर ऑल डिफरेंट डिविनेशन आर्टिस्ट्स. आजकल सब लोग जो है कंबाइन करते हैं मोडालिटीज, सो दे विल यूज एस्ट्रोलॉजी एंड मोक्षपाठ टुगेदर, टैरो एंड मोक्षपाठ टुगेदर, एंड द आंसर्स दैट आर क्रिएटेड आर वेरी फंडामेंटली अमेजिंग. मोक्षपाठ हमारी जिंदगी में पर्सनली हमें हेल्प करता है इन गेटिंग गाइडेंस. पर्सनली इट हेल्प्स अस इन आंसरिंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, टाइमलाइन रिलेटेड, व्हिच वुड मीन व्हेन विल समथिंग हैपन,
Will I get a house in 2022? Any kind of a timeline question. It can help you answer questions about karmic patterns, which I've already said. Karmic patterns के ऊपर आपके question answer कर देगा. It can help you answer questions. Why is something happening in your life? But more than that, it will also help you in getting a solution. जब आप पूछते हैं कि चलो ये तो हो गया ना, अब मैं अगला स्टेप क्या लूं कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूं. What should I do to move out of this situation? And from there, we come down to answering and getting solutions. And सबसे बड़ी बात है, because Mokshapatta talks about us at a soul level. ये हमें मानव रूप में नहीं देखता. It doesn't see us as a human being. It sees us as a spiritual being. इसीलिए अगर इस बोर्ड में आप देखेंगे तो इसमें डेथ का बॉक्स नहीं होता है. There is a box which defines birth, but there is no box which defines death because the soul does not die. आत्मा अमर है और इसीलिए इसमें डेथ का बॉक्स नहीं. Whatever reading we get is from the concept of the soul's journey through humanity. एक आत्मा की जर्नी ह्यूमैनिटी के थ्रू कैसी चल रही है, कहाँ फंस रही है, क्या लेसन सीखने हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्षपट्ट. गोल सिर्फ एक है, डिजायर्स को मास्टर करो, कर्म को मास्टर करो, fulfill all your roles and duties and attain moksha. And that is it. But in a life where there are so many things that you can choose from, कितने choices है, कितनी गड़बड़ सड़बड़ है, कितना illusion है, भ्रम है. In all of this situation, how do you break this cycle and get back to where do you want to go? That is the strong point or the strength of using Mokshapatta. Now, when we compare the second, then professionally, if you are doing Mokshapatta reading, Mokshapatta professionally जो लोग use करते हैं, they can either become trainers or they can become professional readers. Reading के लिए people who are already into numerology, astrology, tarot, any divination modality, वो इसको combine कर सकते हैं with their own modality or use it separately as they want. Mokshapatta does give remedies. Most of the remedies are at the soul level. It will tell you अंदर जाओ ये काम करो. You need to atone. You need to work on your own energies of forgiveness. It talks about the chakra system. It talks about Prakriti. It talks about Mahat, which is the father element of all the 5 elements. भाई जैसे 5 elements हैं, 5 तत्व हैं, उसके ऊपर एक महातत्व है जिसे महत कहा जाता है. So महत के बारे में बताता है. It talks to us about gods from the perspective of not religion again, but from the perspective of cosmic good, from the perspective of moksha, from the perspective of absolute knowledge. So there's a lot of information and there's a lot of knowledge based in itself when it comes to Mokshapatta. और Mokshapatta एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाएगी how to fulfill your desires even though you're detached from them. It will talk to you about how to live your life and yet enjoy your life but without attachment. And it will teach you how to really grow as an individual. एक इंसान की तरह कैसे grow करें. Apart from that, professionally, of course, when you start using it, it will also give you a lot of money and a lot of abundance in your life. Mokshapatta जो थी ब्रिटिशर्स के जमाने में, जैसा आपको मैंने बताया, was lost. And then it was refound very recently, a few years back, maybe 10 years back, in the south of India. इसके boards destroy हो गए थे. The boards, original boards were destroyed. So this is a newer version of the board. The board initially had more than 100 boxes. But now it is lost with no information. So we are hoping कि जैसे ये 72 किसी को मिले हैं, somebody else will find more, and then perhaps one day we will be able to study this board in its complete intense knowledge and its complete form. पर आज के दिन ये 72 boxes are more than enough to guide us through. But एक बात याद रखिएगा, there is no mention of Mokshapatta in the Vedas. Vedas were created at the time the universe was created. And Mokshapatta को create किया गया था 13th century में.
But Mokshapatta ka total knowledge is based from the Vedic knowledge and the Vedic concept of karma and dharma, the way a person should live a life to attain moksha, to attain his potential as a human being. तो अब मैं मोक्षपाठ को लेकर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लूंगी, and then we will talk about the program, and then we will do one question answer reading for all of you. ठीक है, so 1 minute आप मुझे दे. Whoever wants to ask questions about Mokshapatta as a modality, as a subject, please raise your hands. Yes, Sapna ji. Sapna Sood Goyal. गुड इवनिंग मैम. Good evening. हाँ, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एंड ये पूछना है कि इससे हम अपना जो भी इवेंट जैसे हम एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं, तो इवेंट का पता कर सकते हैं कब क्या होगा, कैसे होगा? Yes, आप कर सकते हैं. टाइम देखिए, इसमें टाइम का स्पेसिफिकेशन कम होता है सपना जी, बिकॉज यूनिवर्सल एनर्जीज में टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं करता. टाइम मतलब समय. सो 3 बजे 4 बजे वो एग्जिस्ट नहीं करता. बट मंथ जैसे हम निकालते हैं ना कि 2022 में ये हो सकता है, या अगर हमको हॉरोस्कोप बनाना है तो हॉरोस्कोप एंड ऑल सब बन सकता है मोक्षपाठ से. ओके, मैं डाउजिंग भी करती हूँ, तो उसमें भी हम इसी तरीके से मंथ्स डेज निकाल पाते हैं, तो सेम एज मोक्षपट्टा में भी. हाँ, मोक्षपाठ में मंथ्स निकल जाएगा, डेज निकल जाएगा, 12 घर के हिसाब से आपकी पूरी रीडिंग निकल जाएगी मंथली, एनुअली, विदाउट द डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. यस, पल्लवी जी. पल्लवी चंदोरकर. Hi, good evening all. Yeah, my question is how can you give some examples to just elaborate how exactly Mokshapatta will guide you, because I am in the healing modality as well. Pallavi, abhi we'll be doing question answers na, to aapko pata chal jayega. Okay. On one more thing. हाँ जी. Yeah, fine, got this. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये जब करते हैं तो ये पर्टिकुलरली रिजोनेट करता है to someone personally, या जिसका वो बोर्ड है उसके साथ, या we can do it for others? How exactly? मतलब अरे you see, the board remains the same. It's like a deck of tarot. जैसे tarot का deck होता है और आप अपने लिए रीडिंग करो या सामने वाले के लिए करो, it's your choice. The same board remains the same. आप अपने लिए रीडिंग करो या हजारों लोगों के लिए करो, it doesn't matter. So does this also needs protection in some or the other way as we need for other things? You just cleanse it every full moon. That's more than. Okay, nothing on your part like protection to protect you from the divine energy or whatsoever, right? Okay, thank you. आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी, honestly speaking. Okay. सालों में I have never come to a point where I have had to protect myself or do any kind of shielding and all. Though as a part of my program मैं सिखाती जरूर हूँ cord cutting and all. For those people जिनको ये लगता है कि मन में थोड़ी शंका है या hesitation है of how things will happen, I teach it. But personally, I have never had to use it with Mokshapatta ever. So it is not mandatory ki every time, for example, when you do deck cleansing and everything, it is mandatory every time you need to cleanse it. No, not at all. Not at all. For this, it is not required. So it is on any go, on any place. There is no restrictions as such that you can use this or कुछ भी use कर सकते हो. कुछ भी कैसे भी कहीं पे भी, you will not have a problem with this. Okay, great. Like I'll tell you one thing, from the time I've started teaching Mokshapatta, I have stopped doing readings. बहुत ज़्यादा time नहीं मिलता है मुझे. So for me, like there are times when I don't cleanse my board for 3, 4 months also, and when I do a reading, the reading is always fine. So there's no problem. There is no fixed limitation with this board. So what I do is whenever I cleanse my crystals and all, I also just cleanse and energize the board. Okay, great. That's safer side, exactly what we can say in that. Great. Thank you so much. Cleaning is once a month. Hanji Preeti ji. Cleaning is done once a month on specific days. Once a month is more than enough. You were just mentioning the day also. Full moon. Thank you. You're welcome. Yes, Ashwini ji. Ashwini Gopale.
Hello. Hello. Hi, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you so much. Ma'am, how do we correlate this part of reading with our everyday readings? Like we read horoscopes every day in the morning, right? Can we correlate this with our everyday reading, or is it Yes. on monthly or yearly basis? You can take out your everyday reading also. That is Okay. your choice. Okay. I'll tell you one of my every batch that passes out, they get an opportunity to create something like an online program, which goes live on YouTube. So I had my students, they were doing a weekly program. So Okay. weekly program, what they were doing was they were doing it for finance, spiritual growth, personal growth, relationships. ऐसे करके उन्होंने 5-6 areas लिए हुए थे. So आप उसको weekly कर सकते हो, आप उसको daily कर सकते हो, आप उसको दिन में 2 बार कर सकते हो, morning, evening. That is your choice. Okay. This board has no limitations. Okay. And can this be treated as career? Like now tarot has become a career oriented business, like you can create your own career out of it. Right. This I came across when when you had put your advertisement, otherwise I was not aware of any such thing. So is this okay, from this can we make out a career out of Yes, it? you can because see, I'll tell you one thing. One of my students, no, Ashwini ji, the first batch that I took for teaching was last year. Before that, I used to only practice reading for people. Like, जैसे tarot read करते हैं, मैं वैसे Mokshapatta read करती थी. So one of my students in the first batch, she has no background of spirituality or divination. She's a totally new person. She has no idea about, she did not even know how to meditate at that time. Huh. From there to a point where in 6 months time, she had 2 clients every day. So her entire business is only based on Mokshapatta. Okay. It's very possible. You Okay. can create it. Okay. These are my questions. Thank you. Yes, Hari ji. Namaste, madam. Namaste ji. I am Srilata. Ji Srilata ji, please tell me. Yes. I have one doubt. Is it reading like a horoscope or some puja board? बोल के एक है puja board. I don't know. One puja board with alphabets and numbers will be there, and spirits will be coming and. No. It is not like an Oja board. It's not an Oja board. Okay. It is not like that. Mokshapatta board may the only concept is we always call on invoke the energies of our gods, whichever god you believe in, you invoke their energy. Okay. This is not an Oja book. This will not work on any spirit form or any kind of an entity form at all. Okay. This only works on divine energy, nothing else. Okay. Thank you. We can use anywhere. Yes, you can use anywhere. See, like a lot of my students, they take it for exhibitions and all, for divination fairs, for astrology fairs, and they do reading there also. There is no harm. Like horoscope, we can read. You can create horoscope, or you can also do guidance questions, clarity questions, what to follow, which choices to make. Is this the right choice for me? Anything like that. Okay. Hello, You ma'am. mean my great grandfathers? Hello. Yes. My great grandfathers are very great in the spiritual field. Okay. They used to tell forecast without any horoscope or like that. They use with a glance. They used to tell the future. Right. With a glance. Now they are not alive. They used to do like that. Like that, we can. This board can give the answers like that. I am asking. See, it will give you predictions, but one thing I want you all to understand here: future can never be 100% set in stone. There is something known as human consciousness. If I know that something is not going to work out for me, and I start working on it from today, healing it, going back, moving, dealing with the karmic effect of it,
there is a possibility that I will save myself from that bigger problem in the future. Okay. It will come in a small way. So I personally want, like, I have a very strong faith in the last 7 years. One thing that has come to me very clearly is, no, there is nothing known as 100% set future prediction. It's always I 90%. know only bad newses in a dream like that or something. I will experience that in a 1 week or like that. My close relatives will be going up. The bad news, but who is going? Whose news is this? I don't know. But Okay. something is going wrong. Like that, I will be experiencing. Right. So see, a lot of people, these are all part of psychic skills. We all are born with them. We are all born with psychic skills. None of us don't have them. Each one of us has the same set. The only thing is, it is more developed in you than in others. Yeah. So if you don't want to see it, no, please ask the divine to stop showing it to you. Request them not to show it to you. Do it 3-4 times. You will see that this will stop coming to you. It's your choice. But then you will be shutting down that power within you. It's a choice. When you have psychic powers, the bad comes. Later, the good also comes. But if you want to shut it down, you can simply request for that aspect of good news is I won't see any good news in my life, but all the bad things will be seen before to me. So then you can ask the divine to stop showing it to you. There is something known as free will. Divine will follow. My husband is gone in front of me. My father is gone in front of me. That I don't know. See, ma'am, for people, I don't know that. See, I can only say one thing. For anybody who's very spiritual, who's psychically inclined, life is never easy. Life is tough in different ways. Have faith on yourself and have faith on your divine. We don't know what our path is. So no matter what, with all these when your clairvoyance, clairaudience, and your psychic skills get activated, it brings to you a lot of responsibility and power. A lot of responsibility. So if you feel that you don't want to use it, you can ask the divine to stop showing it to you. They will never abuse that power, that free will, but it has to be your choice. I am not having any power. That unknowingly they will be coming. It's not unknowingly. This is called psychic power. Okay. This is what's known as psychic power. So if you don't want to see it, you can simply ask them not to show it. Right? Okay. Thank you, madam. Thank you, Rini. I have a question. Hello, ma'am. Yes. Please wait. Let Rini ask a question. We are taking one. Hello, ma'am. Namaste. Namaste. How are you? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? I am from Kolkata. Yes. Tell me, Rini. हाँ मैम, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ. मैं आपसे बस एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी बाद में ज्वाइन किया. फर्स्ट मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही थी, ठीक है. तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि टैरो रीडिंग वो सही नहीं है, सही है एस्ट्रोलॉजी. वो न्यूमरोलॉजी को भी सही नहीं बोलते हैं. अब आ गया है ये मोक्ष बात. तो अब तो अगर मैं किसी के सामने ये खोलकर बैठ जाऊं कि आओ सांप सीढ़ी से मैं देख सकती हूँ तुम्हारा भविष्य क्या है, तब वो तो फिर से मतलब आप समझ रहे हो कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ. देखो, लाइफ में ना बहुत सारी चीजें जो होती है ना, लोगों को दुनिया में पता नहीं होती. जब कुछ भी नया आता है तो लोग यही सोचते हैं कि वो बेकार है, वो स्टुपिडिटी है, वो एक जोक है. बट I personally believe astrology helps you guide. All of these are guiding aspects. I don't know astrology and I don't follow astrology. Very honestly speaking. Not because उसमें कुछ गलत है या सही है, but because मैं ही मानती हूँ जब मुझे कोई astrologer बोलता है ना आपका ये समय खराब है, तो मैं जाकर उसको heal कर देती हूँ और उसकी healing से मेरा वो time period ठीक हो जाता है. With my experience, I only know one thing. All of these things, numerology, astrology, tarot, Mokshapatta, इनका काम है आपकी जिंदगी को help करना, grow help करना, transform करना. And as far as I know, आज तक मेरी कोई भी reading
फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो या रूट कॉजेस वाइज हो, मोक्षपाठ से गलत होते हैं। एंड आई हैव नेवर मेट अ पर्सन हु हैज सेड ये सांप सीढ़ी से आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। सो बट हाँ, ऐसे लोग आई एम श्योर होंगे दुनिया में, बट मेरे पास में ऐसे लोग नहीं आए बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन व्हाट आई डू। हम जब कोई भी फेथ से करते हैं ना, तो वो हमको रिजल्ट देता है। एज फार एज द क्रेडिबिलिटी इज कंसर्न, क्रेडिबिलिटी इज नॉट अ क्वेश्चन। आप रीडिंग अगर करोगे और सही करोगे, आप देखोगे 100% एक्यूरेसी है। तो ये मैम टैरो के जैसे ही होता है ना कि एनर्जीज कनेक्ट करके हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब एनर्जी से ही सब कुछ होता है ना, मतलब एनर्जी तो टैरो में चेंज होता है वैसे ही। एनर्जी चेंज नहीं होता है, इसमें अच्छा। स्टैंडर्ड एनर्जी रहता है। दिस इज नॉट बाउंड बाय योर एनर्जी, दिस इज बाउंड बाय द डिवाइन एनर्जी। तो आपको कोई भी आंसर चाहिए हो, ये आंसर आपको वही देगा जो इसको देगा। अच्छा, it doesn't matter whether you are upset or not, it will still give you the answer which is right. अच्छा, हाँ ये भी मैं मुझे पूछना था कि अभी क्या बोलते हैं ना टैरो में, जब आप अपसेट हो, जब आपका एनर्जी सही नहीं हो, तब आप नहीं कर सकते। ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। सो दो इसके अंदर हम ये, आई ऑलवेज रिकमेंड दैट आपको ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग करके यू शुड सिट फॉर योर रीडिंग। whenever you do a reading, always grounding, center yourself. But आप कुछ भी सोच लो और आप कोई भी इमोशनल स्टेट में हो, बोर्ड की रीडिंग उससे इवैल्यूएट नहीं, चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, समझ गई। आप एक क्वेश्चन को 4 बार पूछ लोगे, फर्स्ट टाइम जो आंसर आएगा वही सही होगा, 3 बार में वो आपको वो आंसर दे देगा जो आपको चाहिए, बट द आंसर इज ऑलवेज एक्यूरेट ऑन द फर्स्ट ट्राई, एंड इट इज द आंसर व्हिच एक्चुअली मीन्स एंड इज करेक्ट। मतलब मैं अगर 4 बार भी करूंगी तभी सेम ही आंसर मिलेंगे मुझे? चौथी बार में आपको अलग मिल जाएगा जो अच्छा, आपको चाहिए, लेकिन पहली बार आपको, पहली 2 बार 3 बार आपको वही देगा जो उसको देना है। सो मोक्षपाठ में आप कुछ भी कर लो, if you will not listen to it, it will still give you the right answer. It doesn't matter what your energy is. ये बोर्ड की एनर्जी अपनी होती है और वो डाइल्यूट नहीं होती, वो डिस्टॉर्ट नहीं होती है। मैं अगर मोक्षपाठ में एडमिशन लूं, अगर मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट मिल गया, मतलब मैं भी कर रही हूँ, लेकिन वो मतलब क्या वो बहुत ही कट्टर टाइप का, मतलब मैं आपको क्या बताऊं मैम, यहाँ पे ना ऐसे भी बोलते हैं आजकल तो टैरो रीडिंग आ गया है, कुछ भी बोल देते हैं। अब कहीं पे अगर मैं ये खोल कर बैठ जाऊं तो और भी नेगेटिविटी आएगा ना, तो मैं उनसे कैसे डील करूंगी, मतलब आपको क्या डील बोलना है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? डील हमें तब करना होता है जब हम किसी को प्रूफ करना चाहते हैं हम गलत है या सही है। There is no proof. I mean, मेरे जैसा इंसान तो प्रूफ करने बैठेगा भी नहीं लाइफ में, क्यों बैठना है? I know what I'm doing is adding value to people's life. अच्छा, समझ गई मैम। किसको प्रूफ करने जा रहे हो यार? ईश्वर ऊपर है। देखो, कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, they are all on the same path. तो उनकी सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। The same way मोक्षपाठ की अपनी स्ट्रेंथ है, एस्ट्रोलॉजी की अपनी स्ट्रेंथ है, राइट? सबकी अपनी स्ट्रेंथ है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। मतलब मैं बहुत दिन से मोक्षपाठ मतलब मैं इंटरेस्टेड थी, लेकिन इन सब लोगों के वजह से ना मतलब दिमाग खराब हो चुका था, क्या बताऊँ आपको। नहीं, बहुत चीजों में मत पड़ो, बहुत ज्यादा चीजों में, जो चीज कर रहे हो उसको जेन्युइनली अच्छे से करने से। नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उन्नी जी, कैन आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज? Namaste, ma'am. Sorry, I cannot come on camera. Not a problem. Tell me. Thank you. So I joined a little late in the session. So my question is, as you are already aware of my condition. Abhi, I'm not taking personal questions, Unni ji. We'll take them after. No, not personal question. Actually, I want to know whether this Mokshapatta can be used for understanding or knowing the root cause. Or it can be used. To know the root cause of your problem, or why is it happening, and what work should you be doing on your own self to get out of it. This board can help you get the guidance. Okay, that's what I want to know, because there I am stuck. So I want to know, I want to move forward with the right step, actually, because the time is running, and I want to get into the right track. So it can be used, right? Yes, it can be used. Okay, thank you. Thank you, Anuji. Pushpa ji, Pushpa Khaitan. Can I have your question, please? आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूट हैं।
Please unmute yourself. Hello. Yes. I wanted to ask a personal question. Personal should I ask question it? we will take a little later. When I'll do start the reading, then you can ask. Okay, fine. Okay. Yeah. Shikha Jain. So guys, जो लोग late आए हैं, people who've joined late, recordings will be shared as a YouTube link later on all your orientation groups and via WhatsApp. So आप लोग देख सकते हैं. Boards will be given by me. When whoever joined the workshop, उनको board हम soft copy में देंगे. You can get a printout of it and get it laminated. Right? Okay. Yes. Shikha. Yes. Hi. Hi. I'm Sweta, and I have only seen promotions earlier. And I had read this Facebook back about this entire lineage, how शिखा, आपकी ना 1 मिनट आप रुको, आपकी आवाज बहुत कट रही है. 1 सेकंड आप रुकोगे प्लीज. कृष्णा, can you please make sure everybody else is on mute? किसी और के बैकग्राउंड से नॉइज तो नहीं आ रहा है ना? Yes, ma'am. I'm checking. Please, thank you. शिखा, आप एक बार दोबारा बोलिए ना. so Sweta, I had read about it earlier on one of the Facebook posts somewhere, like how this lineage was an Indian lineage and how, predictions were done. So I am a tarot card reader. I do numerology, and I have this fascination towards occult. And this is another intriguing one. I really want to learn it, and I want definitely you'll tell us the process. So what made you get into this, and how did you discover tarot? I will tell you one thing. Once upon a time, 10 years back, मुझसे कोई कहेगा ना tarot, I would say ये सब बेकार होता है. I come from that background. I never believed in occult. I never believed in divination, and I did not believe in the effects of spirituality. Let me be very honest. But कहते हैं ना, जब किसी को रास्ते पे आना होता है तो जिंदगी उसको मार धाड़ करके ले ही आती है. So I kind of connected. One second, कृष्णा, यहाँ कोई श्वेता वाजपेयी हैं, वो उनको वॉइस नहीं जा रहा है, जरा उनसे कनेक्ट कर लो प्राइवेट चैट पर प्लीज. देखो ना क्या प्रॉब्लम है उनको. उनका मेरे पास मैसेज आ रहा है. So I was going through a very tough phase of my life, and I got to know my mentor. मेरे mentor जो थी, she was into basically quantum physics, life coaching, and all of that stuff. So she said, "Keep personal one-on-one के लिए क्या करोगे? You join my life coaching का program. Don't practice if you don't want to, but this will help you more because this will give you an insight into what life is, how to live life." So वहां से मेरा core first step start हुआ. At that point also, occult did not come into the picture. Then one fine day, all of a sudden, I saw a rune. It's a Nordic modality, Nordic divination modality है. और runes देखे कहीं पर, and runes kind of really clicked. I was so fascinated by them कि 2-4 महीने तक तो मेरी नींद गायब हो गई थी कि यार कुछ तो करना चाहिए. So then I found a mentor and I learned. And from there, I think that was the day, and this is the day कि वो journey रुक नहीं रही है. From runes to Mokshapatta to Akashic to Bij mantras, and God knows where all it has taken me, and I'm sure it will take me many more places. So for me, occult is like living, breathing. अब मेरे को आज के दिन, after being a Mokshapatta reader for more than 4-5 years now, today I don't need to sit down with the board also. I just close my eyes and I'm like, okay, question, answer de do. And the answers are there. Wow. But that journey has come after going through all these modalities, working on myself. वो intuition अब जाकर इतनी powerful हुई है कि सामने चीज आपको दिख जाती है उस आंसर में. But एक time था when I used to also think कि ये क्या है, क्यों है. So for somebody like me coming from the space of not believing to the space of believing, I can tell you one thing कि अगर एक नास्तिक आस्तिक में बदलने वाली बात है, but मैं नास्तिक भगवान को लेकर नहीं थी, इन सब चीजों को लेकर थी. And today I know one thing, that this all can help you change your life. Because सबसे बड़ी चीज है ना, one of the biggest factors that I feel is we miss the links in between. ये वो कड़ियाँ जोड़ने की puzzles दे देता है. It's like, it will tell you this is piece number 1, this is piece number 5, and just join and you get the connection. But that kind of consciousness needs lot of grilling. I mean, one thing
I've seen Shikha with Mokshapatta, no, development is faster. I've seen my students jinko zero knowledge tha about the occult field in itself. Mokshapatta was their first modality. उन्होंने tarot नहीं सीखा, उन्हें meditation का M नहीं पता था. Breathe कैसे करते हैं, deep breathe करते हैं, उनको वो भी नहीं पता था. From then, for people like this also, within 6 months they have become extremely good readers. Wow. Extremely intuitive readers. So Mokshapatta के साथ एक चीज है, when you start working, no, intuition is something which will grow side by side. Wow. It is growth. I'm amazed that, you know, it's still not got that kind of presence in India. I mean, though being from India, and honestly, I am also trying to link a lot of things together. So I'm looking forward to how we go from here. For me, logic is very important. If I get the logic of things, I'm very much into an occult and science, and, you know, how do you actually connect dots? See, one thing that I would like to tell you is Vedas is the basis of quantum physics also. Very true. When you go talk about the Big Bang theory, you talk about the 7 hermetic principles, whatever you talk about, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शास्त्र में नहीं. सही है. So coming from that perspective, अगर Vedic knowledge पे कोई चीज based होगा, वो बिना science के तो हो ही नहीं सकता. बिल्कुल. It is just how we interpret it and understand it that the science differs. That's true. Thank you, Shikha. Thank you. Chitra Gupta. Yeah, hi. Hi. Sorry, मैं camera on कर सकती. Not a problem. I just want to know if you want to continue with that Mokshapatta, so what is the process like that? I'm sorry, I did not understand. If you want to, अगर हम इसको कोर्स में लेना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो how we can go with that? Abhi, we'll just talk about the course after this. Just give me 2 minutes. Let me finish with the question answer, and I'll talk about the program. Okay, fine. Thank you. Batra, thank you. Manjul Batra. हेलो श्वेता, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रही हूँ. बिल्कुल कभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका कि क्या है ये. और मेरा मन चाहता है कि जब किसी भी बार जैसे ये कुछ भी जो भी प्रेडिक्शंस दे रहा है, और स्पेशली मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी जो आपने बताई है कि ये हमें अपना ये बताता है कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं वो ठीक है या नहीं. यू नो, वो जो डाउट तुम्हारे मन में, चाहे जितना मर्जी आप ठीक कर रहे हो, जितना मर्जी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो थोड़ा बहुत आता है, ये उसको रीइंफोर्स करता है, आपके फेथ को पक्का करता है. आई विल टेक इट दिस वे. बिल्कुल टेक इट दिस वे. तो सबसे पहले मेरा मन ये चाहता है कि मैं क्यों ना अपनी एक रीडिंग लूं जिससे कि मुझे पता चले. आप अभी रुक जाइए, रीडिंग में थोड़ी देर बाद दूंगी, देन यू कैन आस्क वन क्वेश्चन. तो मेरे को जरूर इसके बारे में जानना है, तभी मैं इसमें आगे अटैच हो सकती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. जसमीत नाइनर. थैंक यू. जसमीत नाइनर. हाँ जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है, हाउ टू सोर्स दिस बोर्ड. द बोर्ड इज गिवन एज अ सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम योर ट्रेनर. Okay, so one has to register with the trainer, then you get the soft copy. Thank you so much. Once you do the workshop only then, because ये जो board है otherwise irrelevant if you don't understand the meaning of the board. Obviously. This board is given by the mentors only, and अपने students के लिए so normally क्या होता है, ये एक soft copy में बन के आता है, आप उसको print out लेके laminate करा लीजिए. But for my students, I'm getting it also made in various art forms. Because जैसे मैं read करती हूँ, तो I go out for bigger events also to read, to spread knowledge about Mokshapatta. Because as a mentor, as a educator, मेरा एक बहुत बड़ा काम होता है लोगों तक नई चीजें पहुंचाना. So I am getting it designed in many different art forms so that people can use it properly. अब वो भोजपत्र पे तो नहीं बन पा रहा, but we are trying to make it in different ways of handicraft, hand paintings and all. ताकि जब हमारे students बाद में लेकर जाएं, when they want to do it for our public or they want to do it for a client, they will have something better than a paper printout. But for people who are learning initially, this printout is more than enough. See, I'll show you. I also read with this one. Okay, and do you need a dice for this? जैसे you will need one dice, and एक dice चाहिए. इस टाइप का अगर लकड़ी का dice लोगे तो better है. और गोटी के लिए you can take a ring or a coin या कोई shell, कोई कौड़ी, anything that you have. But then once you take it for Mokshapatta, don't use it for anything else. वो किस चीज के लिए कौड़ी या कॉइन जो बोल रहे हो, किस चीज के लिए होता है? गोटी एक चाहिए होगी ना.
रीडिंग अच्छा, के लिए। गोटी के लिए, अच्छा ठीक है। तो आप एक टेलीफोन नंबर या कोई हेल्पलाइन दीजिए जहां से हम सोर्स कर सके, अगर Krishna आप Krishna will give you the details. Krishna will put the details, contact numbers and all everything right now. राइट। मैं चैट में डाल देता हूँ, प्लीज आप लोग देख प्लीज आप चैट में डाल दो, कृष्णा अपना नंबर दे दो। एंड वन मोर थिंग, आप लोग प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जितने भी मेरे लाइव ओरिएंटेशंस होते हैं ना, that you can find all on YouTube. We do everything live because it is all about spreading. See, first aim क्या है, नई चीजों की नॉलेज बाहर तक पहुंचाना। So आपको बहुत कुछ मिल जाएगा हमारे, lot of meditations, lot of free programs, lot of free orientations. So do subscribe to our channel and also follow us on Instagram, because Instagram पे भी सारी information updates होती रहती है। And one more thing guys, yes, जो लोग हमसे connected रहना चाहते हैं, post this. Even if you don't join the program, you want to know more, there are many WhatsApp groups. कृष्णा एक WhatsApp ग्रुप का लिंक डाल दो, कोई भी एक आप हो तो sufficient है, नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। माला जी, you have your question. Thank you so much, and you explained beautifully. My compliments to you. Thank you so much. Thank you. Hello, Yes, good Mala. evening, Shweta. I just have one doubt. Like, is this similar to Akashic records? No, it is not. It's not. It's different. It is different. Okay. Okay, fine. Thank you. Thank Okay, you. guys. So हम क्या करेंगे? I'm going to put everybody on mute. I will quickly tell you about my program, and then I think Neeta ji and all are here from my current batch, and let's see who's there from the alumnus. So let's see if there is someone who can talk about their experience also. But पहले let me share the details of the program with you. एक सेकंड देंगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। So मोक्षपाठ के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, मोक्षपाठ is basically a board or a path which helps you move away from the path cycle of birth and death. इसको बहुत commonly जाना जाता है as लीला, ज्ञान चौपड़, गेम ऑफ नॉलेज या फिर बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। मोक्षपाठ का जो ये बोर्ड है, इसमें 72 बॉक्सेस होते हैं, और ये क्रिएट हुआ था सो दैट वो अपने स्टूडेंट्स को, पहले के जमाने के जो ऋषि मुनि थे, गुरुज थे, they could teach their students about the Vedic knowledge easily. They could tell them the concept of how life should live, the philosophies of life, the philosophies of karma. Why is it important to live life in a particular manner? ये बोर्ड हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताता है. It also helps us understand our soul's journey. And yes, इसमें हम अपनी इस lifetime की soul journey map कर सकते हैं. Mapping in terms of what are the lessons we have learned, what are the lessons that we need to learn. That all can be mapped out. And each snake, जहाँ सांप है वहां पर कुछ गड़बड़ है. There is a vice, some wrong step that you have taken in your life. और जब भी आप कोई right step लेंगे, it will take you towards a ladder which will help you move up in life. Benefits क्या होते हैं मोक्षपाठ सीख के यूज करने के? It helps you understand your current state. जो present life आपकी जी रहे हैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, choose क्या करूं. Current energy के साथ what is your likely future? With where you are standing, how you are behaving, what is the future probability? And if you don't like it, how to change that probability will also come from here. ये आपके सब questions को answer करता है. तो of course एक बात मैं बता देती हूँ, अगर कोई पूछे ना inner peace चाहिए, happiness चाहिए, तो बस inner peace and happiness is within you. वो बोर्ड नहीं बताएगा, वो आपके अंदर है, खुद ढूंढना पड़ेगा. But yes, if you say I have a choice and I don't know where to go, या फिर क्या मुझे ये काम करना चाहिए, will this be successful for me? It will answer all these questions. ये आपको problems के solutions देता है. It teaches you the right path of karma and dharma. सही रास्ता क्या है? It talks about the journey of a soul in general. कैसे एक आत्मा जो है वो आती है और उसको वापस भगवान में विलीन होना होता है, उसकी जर्नी क्या है? Incarnation जो होता है उसकी philosophy क्या है? मोक्षपाठ also helps you understand that. मोक्षपाठ का अगर हम कोर्स करिकुलम देखें तो ये 7 to 10 वीक्स का प्रोग्राम होता है. ये 6 क्लास या 7 क्लास में नहीं खत्म होगा. मिनिमम 15 क्लासेस होती ही होती है
हर हफ्ते we only have 2 classes because the rest of the time you have to work on understanding it. ये रट्टू तोते वाला काम नहीं है. अंडरस्टैंडिंग ईच रो, उसकी फिलॉसफी को समझो, उसकी इन डेप्थ नॉलेज लीजिए और फिर वहां से आप बढ़ेंगे. सो फर्स्ट जो क्लास होती है वो होती है इंट्रोडक्शन. कर्म क्या है, सोल की जर्नी क्या है, चक्रा सिस्टम्स क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, सिंगुलैरिटी, डुअलिटी इन लाइफ. फिर वहां से हम जाते हैं आगे अबाउट क्लेंजिंग द बोर्ड, एनर्जाइजिंग द बोर्ड. अगर आपको बोर्ड स्टोर करना है कोई पर्टिकुलर वे में तो आप कैसे स्टोर कर सकते हो. फिर अगली 8 क्लास होती है एक एक रो के बारे में. देयर आर 8 रोज ऑन द बोर्ड, सो 1 क्लास गोज टू एवरी रो. बिकॉज द कोर थिंग इज कि अगर आप ये बोर्ड नहीं समझोगे आप रीडिंग नहीं कर सकते. द क्रक्स ऑफ द बोर्ड is in the boxes, the understanding of the boxes, not in only the technique. I have known people जो लोग 3-4 जगह से प्रोग्राम करके फिर मेरे पास आए और दोबारा सीख रहे हैं क्योंकि उनको बोर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया. This is very very important. Then उसके बाद में जो हमारी लास्ट 5-6 क्लासेस होती हैं, that is only about reading techniques. सोल रीडिंग करना है तो कैसे करना है, एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप बनाना है तो कैसे बनाना है, आंसर्स कैसे देने हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, रेमेडीज कैसे देनी है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज बेसिकली अ मेंटरिंग, अ ट्रेनर प्लस अ प्रैक्टिशनर प्रोग्राम. प्रैक्टिशनर वो होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग करते हैं दूसरों की. ट्रेनर्स आर दोज हु विल ट्रेन फर्दर पीपल इनटू रीडिंग मोक्षपाठ. दे विल टीच लाइक आई डू. So because ये trainer and practitioner program है, so how do you market yourself and promote yourself? This is very important. How will you create your business? आपका course बनेगा तो कैसा बनेगा? आपको अगर brand करना है, so how will you start? Because हर city के हिसाब से, हर state के हिसाब से, these techniques will differ थोड़ा थोड़ा. So we will work out on a branding kind of a setup for each person. वो अपने अपने लिए आप करेंगे. Teaching methodology is very simple. 15 लाइव जूम क्लासेस होती हैं जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं. इसके अलावा देयर आर 75 रिकॉर्डेड वीडियोस आल्सो व्हिच आर योर नोट्स. आई डू नॉट गिव अ पीडीएफ मैनुअल. मैं कोई पीडीएफ मैनुअल नहीं देती हूँ, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देती हूँ. क्यों? दिस इज समथिंग जो आपको एक आत्मा के लेवल पर समझनी है और याद करनी है. रट के आप इसे कुछ नहीं कर सकते हो. If you want to work with Mokshapatta, you have to understand it. Understanding के लिए जितना मनन चिंतन आप करेंगे, जितना आप खुद सोचेंगे, आपकी ग्रोथ उतनी है. So 75 recorded videos will be there for you as notes. Then of course a lot of practical practice. Practical practice हमारी शुरू हो जाती है from session number 4 or 5. We don't wait till we end. We start थोड़ा थोड़ा practice so that by the time you reach the end of the board in explanation, आपके concepts clear होते हैं सारे about the board and its meaning. So आप इस प्रोग्राम में 15 क्लासेस में जो करोगे वो करोगे, आप समझेंगे हर बोर्ड, हर बॉक्स को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल्स जर्नी. एक आत्मा की जर्नी क्या होती है वैदिक नॉलेज के हिसाब से प्लस आज की लाइफ के कॉन्टेक्स्ट. बिकॉज वैदिक लाइफस्टाइल एंड टुडेज लाइफस्टाइल में बहुत गैप है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू. सो हाउ डू यू मैच एंड ब्रिज द गैप? 72 प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस को समझेंगे, चक्रा सिस्टम को समझेंगे और उसका कनेक्शन समझेंगे विद लाइफ, कॉन्शियसनेस एंड द बोर्ड ऑफ मोक्षपाठ. फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, कर्म, सुकर्म, कुकर्म, अधर्म, सुधर्म, वाइसेस, वर्च्यूज और कैसे वो हमारी जिंदगी में इफेक्ट करते हैं. सोल्स जर्नी, सोल्स पर्पस और रीइंकार्नेशन. एंड देन ऑफ कोर्स क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग द बॉडी. इसके अलावा हम ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग टेक्निक्स भी सीखेंगे. We will also learn how to create a space of nothingness ताकि जब हमें गाइडेंस मिले तब हमारे और उस गाइडेंस के बीच में कुछ नहीं हो. The guidance should be unbiased and totally uncluttered. फिर रीडिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स की, कार्मिक पैटर्न्स को कैसे समझेंगे और सॉल्यूशंस कैसे देंगे. We will also see how to map the soul's journey and to create an astrological chart according to a specific period बिना date and time of birth के, without the date of birth and time of birth. What are the ethics of reading? How do you create your own cheat sheets? Because जब initially आप reading start करोगे, so you will not remember everything. So how can you create a cheat sheet ताकि एक glance पर आप कुछ काम कर सको बिना सोचे बिना देखे.
एक सबसे बड़ी चीज होती है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन. इफ यू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट द रॉन्ग आंसर. गलत सवाल पर गलत जवाब मिलता है. So how to frame the question in a way that you get the right guidance, you get the right answer. How will you create your own workshop or a program? How will you create a reading package for your client? एक question, 3 question का package करना है, 1 hour question में answer करना है. How will you combine it? Then, of course, a lot of live practices, and at the end of it, you will not get certified just because you've joined the program. To get your certification, there will be an assessment. इसमें आप अपने साथ एक गेस्ट लाएंगे और आप उस गेस्ट की रीडिंग करेंगे. All the students will be a group thing. सबको breakout rooms में डाला जाएगा. You will be given 1.5 hours and you will be assessed at that point of time. And by chance, वैसे कभी होता नहीं है, but by chance अगर कोई अपने assessment में फंस जाता है, so it's not that they are out of the course. We will simply tell them where they need improvement, कहाँ उनको काम करना है. They can improve and sit again for the assessment with the next batch. With this way, क्या होता है? आपकी growth पूरी होती है, and as a reader, आप कहीं पर भी compromise नहीं करते हैं in the quality of work and reading that you give people. As readers, we have to be very responsible कि हम जो भी कुछ सामने वाले को दे रहे हैं, it is accurate and authentic, without damaging or breaking somebody's life apart, destroying somebody's life. The idea is to empower, not to disempower. So all these things keeping into account, there is a lot of work that goes into it. So आपको इस कोर्स में जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिलता है. Apart from that, once again, 15 classes over a period of 7 to 8 weeks. अब बीच में अगर suppose festivals and all आते हैं तो उसमें time फिर बढ़ जाता है. And 75 recorded videos are given to you as your notes. Program खत्म होने के बाद में we have a WhatsApp group on which all the alumni are there. आपके जो भी problems होते हैं, because देखो problem शुरू में नहीं आएगी. Once you start reading, once you start practicing professionally, problems, questions तब आते हैं. तब आपको लगता है अच्छा मैं गलत तो नहीं बोल रही. Where am I getting stuck? So in such a situation, this WhatsApp group is your support group. Wherever you get stuck, you can just put your question there. Me and the other alumni will help you answer the question. They will help you. They will give their perspectives towards it. जब हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है तो जो ग्रेजुएटिंग बैच होता है वो इसी टाइप का एक इवेंट करता है which I host for them. They also call their guests. I also call my guests, and it's basically like a announcement of graduation and their skills, showing of their skills. वो रीडिंग करते हैं, 1 question reading, जैसे मैं आप लोगों के लिए अभी कुछ देर में करूंगी. उसके बाद में हर बैच को अपॉर्चुनिटी मिलता है to create a program weekly, monthly, 50 annual, like fortnightly, which is promoted on our YouTube, our Facebook, our Instagram channel of Mokshapatta Maestros, so that they can get a lot of practice on the screen in front of cameras, and people will start knowing them as credible readers. Because हम उन्हें promote करते हैं, वो खुद अपने आप को promote नहीं कर रहे हैं. There's a very big difference in somebody promoting themselves and somebody else promoting a practitioner. And of course, we also have an alumni channel. जब हमारे students कुछ भी काम ऐसा करते हैं which they have learned from us and they want to promote it further, when they do their own orientations, when they do their own sessions, we also help them promote it on our alumni channels. So this way we provide a lot of post program support ताकि आपको best to best experience मिले of becoming a professional in the field. Because Mokshapatta अभी tentatively नया है, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में. Transcending Beliefs जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेडमार्क एक्ट में सर्टिफाइड है, एंड वी ऑलरेडी आर रजिस्टर्ड टू सर्टिफाई पीपल as trainers and practitioners. So all our certificates will have value, credited value, as we have been certified by the Trademark Act of Government of India under 4 categories: online training, certification of people, healing, coaching, and counseling. For all these, we already have the trademarks. Abhi afternoon batch to mera full ho gaya hai. It had started on 22nd of March. But अगर कोई 1-2 जने उसमें join करना चाहेंगे तो आप उसको join कर सकते हैं, provided
4 क्लासेस मिस हुई हैं उसमें आप लोगों की. आप जो भी आफ्टरनून बैच ज्वाइन करेगा वो रिकॉर्डिंग से उनको कवर करनी पड़ेगी. And I will give them a session separately to clear all their problems and doubts. But evening batch is starting from the 11th of April. ये Monday and Thursday होगा 7:30 to 9:30 p.m. So whoever wants to join the Mokshapatta batch, this is the best opportunity. And Mokshapatta का एक ही batch शुरू होता है morning में या एक ही batch होता है evening में every 3 months. So the next batch will only come after 3 months, guys. उसके पहले नहीं मिलेगा option. Iska actual energy exchange was 19,500, but for those who will register today, it is only 11,500, which is payable in a single installment. या आप 2 installment में भी pay कर सकते हैं. Now, those who are new to me, I'm a life coach, body psychotherapist, divination expert, and a holistic educator. और मुझे कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, like the best international trainer for energy therapist in 2021, best therapist in 2020, best mental wellness center in 2019, and the Sarojini Naidu award for working women in 2021 again. ये इसमें लिखा नहीं है. So those who would like to register, please understand, courses starting from 11th of April, Mondays and Thursdays, 7:30 to 9:30 p.m. The fee, if you register right now, is 11,500. आप इसको 2 installment में भी pay कर सकते हो या single installment में, जैसे आपको comfortable लगता है. Krishna will share the details with you of the program. While आपको program को लेके जो questions पूछने हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं. Just give me 1 second and let me stop the screen share. 1 second देंगे आप मुझे. Yes, I will take your questions now for the program. Please raise your hand. And हेलो हेलो श्वेता जी, आप म्यूट में मैम. मैं म्यूट हूँ, मैंने अनम्यूट कर लिया है. 1 minute, आप रुकिए मंजुल जी, just 1 second please. Thank you. Neeta Srivastav ji, are you there? I can't see you. Wait, let me just check if she's there. Yes, she's there. Neeta ji, can you please unmute yourself? Yes, please. Can you share your experience of what you're doing in the Mokshapatta program right now? Surely, I'll do that. It will be a pleasure. Thank you. Good evening to everyone. Can you hear me, please? Yes, I can hear you. Please go ahead. Okay. I'm Neeta Srivastav, and I'm in the teaching field. I've been a professor for the last 30 years, and I was literally, what do I say, plagued with the disease that I know everything. So I don't have to learn anything. But surprisingly, after meeting a person like Shweta, it has changed my complete, I must say, thought process. First of all, I belong to Varanasi, where I have heard a lot of people talking about these things, but they never clicked to me. Why? Because the last sentence always used to be, मुझे विधि नहीं आती, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे क्षमा करना. मुझे ये चीज कभी भी अच्छी नहीं लगी. जब हमें कुछ आता ही नहीं तो हम क्या कर रहे हैं. तो मुझे श्वेता जी में एक बहुत अच्छी चीज मिली कि वो गाइड है. And she really, it makes the difficult. First of all, she's very knowledgeable. She has spent lots and lots of time in reading, because I'm really attracted to her because of her knowledge. And now I really feel that she makes the things so simple. And it is, I shouldn't be saying that. It is sad that I met her at a very late stage. I wish I had met her earlier. But nevertheless, I'm enjoying myself. And more so, at this age, you cannot ask anybody for advice. And if they give you also, you may not accept it. Because as I said, no, you feel that you know everything. But here, there's a board which tells you your most appropriate answer. And how to read that, she goes from simple to difficult. So I can say that everybody can learn it. And you will all be very happy doing it. You have a friend for lifetime, that is your board. You ask the board in the morning, you ask the board in the night, and there is no restriction whatsoever.
Thank you, Shweta ji. I'm Thank you, Neeta ji. so very thankful to you, and I'm in gratitude. Thank you for being here, Neeta ji. Neeta ji is doing the current batch, जिसके भी सिर्फ 4 classes हुई हैं. तो अभी तो we are all on the move to learning much more together. Thank you, Neeta ji. Yes, Taranjeet ji. So अभी आप सिर्फ program से related questions पूछिए. I'm going to give everybody 10 minutes. Those who want to register, आप तब तक register करो. जिसको कोई program workshop को लेके confusion है, first ask me your questions regarding the workshop. Then I will move within, it's 8:40, 8:50 sharp. We'll start question and answers personal level pe. Your personal questions will be answered from 8:50. So right now I'm giving 10 minutes to everyone. Please start registering. Yes, Manjul ji, अब आप अपना question पूछिए please. हाँ, मेरा तो सेम ही क्वेश्चन है श्वेता जी कि मैं पहले कुछ रीडिंग इसके बारे में. Then please wait. अगर reading है तो 5 minutes रुकिए. We will start with that at 8:50. Till 8:50, I'm just waiting for people to finish their registrations and come back. Okay. Thank you. Varsha Gala. Hi, Shweta. I want to know if I am not able to join this time. So can I register and do after next batch whenever it is possible? Yes, you can. So in the afternoon batch, if I want, it will be there. Yes, you can register. So उस case में आप please जब register करके payment screenshot भेजेंगे ना, so just pen down that you're registering for the next batch. So they'll make a note in the next batch list for you, and they will contact you again once the dates are finalized. Right. The payment will be the same then, 11,300, right? If you register now for the next batch, 11,500 will be the payment. Yeah, till night it is okay. Yeah, it is okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yes, Sapna ji. Sapna Sood Goyal. Good evening, ma'am. Good evening. मैम मैं रजिस्ट्रेशन तो करवाना है 11th अप्रैल में, बट पेमेंट मैं करूंगी मॉर्निंग में. तो आप उसके लिए कृष्णा से कनेक्ट करिएगा, बिकॉज आई विल बी बिजी इन सेशंस टुमारो मॉर्निंग. ही विल हेल्प यू विद एनीथिंग दैट यू नीड. ओके मैं अभी कॉल करना पड़ेगा या मॉर्निंग में? आप उनसे कभी भी कांटेक्ट कर लीजिएगा. सी वंस 10 रजिस्ट्रेशन करेंगे, द फी विल कम बैक टू 19,500. सो आप कृष्णा से बात करके कर लीजिएगा, बिकॉज आई विल, मेरी ना सुबह 10 से लेकर रात को 10:30 तक क्लास होती है, 10:30 तक. So sessions full day. So he is the best person to contact when you need any kind of help. He'll be there for you. Okay, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Mosmi ji. Hello, I'm waiting for 8:50. It's my personal question. Okay, then wait. Give me 5 minutes, please. Just give me 5 minutes. Yeah, thank you. Thank you. Okay, so if there are no more questions regarding the workshop, give me 2 minutes while I set up. तब तक हम वेट करेंगे. एंड गाइस, आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग. जाकर अगर आप हमारा YouTube पे देखेंगे ना, so there are a lot of testimonials there today. It was little late for me to impact. Sanchita, please wait for the questions. Abhi, I'll take all the questions in a while. So we were little stuck because of something else, and I forgot to inform my alumni batch to come. Otherwise, they would have shared their success stories, because unke success stories se zyada powerful to life mein kuch nahi ho sakta. And as far as the programs are concerned, agar aap hamare जाकर ना channel पे देखिए, Instagram channel of Mokshapatta Maestros, you will see Aarti's program which she did for 3 months on zodiacs. So उसने हर star sign का reading Mokshapatta से निकाला था for 3 months. And everybody who heard it, at the end of it, they were like, this is 100% accurate. So as far as knowledge is concerned, as far as, work is concerned, as far as growing self and profession is concerned, Mokshapatta se better and bigger kuch nahi. This is like one of the best modalities I have come across. Mute karke rakho apne aap ko, everybody. It's my request to you. Stay on mute when you're not talking. Krishna, can you please mute everything? Yes, ma'am. Thank you. And yes, jo log, for others also, I want to tell you all one small thing. Day after tomorrow, Sunday, 10:30 a.m., we have another orientation on Vedic switch words. Vedic switch words are a collection of 108 words. 108 words का collection है,
which can instantly change your energy, which can change your energy from negative to positive, from scarcity to abundance. And iske itne miraculous stories hain. If you go and check out our Google review page, if you go and check out our YouTube, आपको लोगों के इतनी सारी stories मिलेंगी Instagram और Facebook पर that आप विश्वास नहीं करोगे. Like yesterday somebody said कि उनकी mother की एक आंख में vision नहीं थी, and with repeated use of one of the switch words that we will discuss on Sunday, उनका धीरे धीरे vision clear होने लग गया है. Doctors had said vision नहीं आ सकता. So from zero hope to creation of hope, all of this is possible through switch words. So Vedic switch words में जो लोग interested हैं, जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, please join us on Sunday at 10:30. Yes, Preeti ji, you can pay in an hour's time today, not a problem. That is perfectly fine. Those who have made the payment, मेरे पास 2-3 messages आए हैं payment के. Thank you very much for making it. I can't see your names because वो एक XXX करके number आ रहा है. तीनों का I can't see the names. So thank you for making the payments. Tomorrow morning, somebody from my office will connect with you and add you to the groups. जिस भी आप batch में join करना चाहेंगे. Thank you so much. Okay. So Vedic switch words का जो का group link कृष्णा ने आपको दे दिया है. और आप लोग इधर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. Those who will pay in the morning ना, आप मुझे इसलिए नहीं देख सकते थे, मेरी डाइस नीचे गिर गई थी, मैं नीचे झुक के डाइस उठाती थी. Now you can see me. So 1 minute. कृष्णा आप मेरे को spotlight कर दो please. Okay, ma'am. Yeah, thank you. So basically आप लोग जरूर आना for Vedic switch words. This is something जो आपकी problems को छूमंतर कर सकता है immediately. And I think let us start with the questions. So those who have private questions, raise your hand. I'll start taking questions. अच्छा, please raise your hands and stay on mute, ताकि पीछे से कोई background noise नहीं आए. Pooja Achra. Can I have your question? Pooja Achra, can I have your question? Hi Shweta, good evening. Your session was amazing. Thank you so much. Thank you. Can I ask a personal question now? Yes, please. Now we'll start with personal questions. Please बताइए. Okay, I mean, this is a new modality for me also, and I was really happy to learn it. And my question is like, what is stopping, what karmic pattern maybe in previous birth is stopping me to go ahead? That's my question. Ahead in what? Ahead in what field? Which space? Ahead in life, like professionally or... So you have to understand why this is important is Pooja, because it's not necessary that only one thing will stop multiple aspects of our life. For each aspect, no, there are multiple or different blocks. So let's stick to one so that I can quickly answer your question and then help somebody else. So एक area of life पकड़ लीजिए. Okay, one area of life is my personal life. Okay. Like what changes do I need to make and what karmic patterns am I holding? One question, please. Either karmic pattern or changes. Changes. Okay. So basically, you know what? Somewhere or the other, you're very stuck on certain behaviors of your life. ये behaviors belief की वजह से आते हैं, beliefs which are not your own. The things that you need to do is identify these beliefs. Now, the fact is, no, suppose we talk about a belief. A belief could be that I am right in this situation and the other person is wrong. I'm just giving you an example. It might not be the same for you. But if you see the same situation from somebody else's perspective, their perspective will also be right. True. So sometimes we just need to give up our perspective and see the other person's perspective before we can find the path ahead, because we need to put our perspective alongside them and merge them into one group. That's what you need to do. Thank you so much, Shweta. That was a very clear guidance. Thank you so much. Thank you. Then can I have Taranjeet Kaur? Taranjeet, can I have your question, please?
Good evening, ma'am. Good evening. It was a beautiful session, introduction session. Thank you. Actually, I am into the spiritual journey from 18 years. And some obstacles or the other come. When I go one step ahead, I feel, yes, I am. But then some obstacles come somewhere or the other, and then वो सीढ़ी नीचे चली जाती है. Is it my karmic account or the methods are not right? Okay, so you want to know what is stopping you from moving ahead, right? Yeah, I am meditating at least more than an hour sometimes. And then वो 1 week ठीक हो जाता है. Then something or the other happens. Either some obstacles in my daughter's marriage or my son's thing. So I'm relating everything. Okay, Taran, listen. Whatever you're doing it with the energy of expectation. If I will do this, this should happen. Okay. If I'm meditating, it should give me peace. If Yes. I'm working on myself spiritually, I should get XYZ, right? Okay. That Yes. needs to go away. See, spirituality का ना एक बहुत simple rule होता है. Expectations Surrender. result. Surrender. काम वो एकदम एक गीता में कहते हैं ना कर्म कर फल की इच्छा मत कर. Your job is to do the karma. Please just let me finish. See, you have to understand. Even when we do the Gayatri mantra or the Mahamrityunjay mantra, no, even without the without saying there is this expectation कि भगवान सब ठीक रखना. है ना expectation. But the one thing that spirituality truly wants or God truly wants from anyone is no, that we just walk our path. We don't think about anything else. So if you can just minus this expectation, no, कि मेरे if I will do this, this is the result. Just minus that expectation of result, and replace it with I will get what is right for me. Just replace it with that. You will start seeing changes coming. Because for you, what you've got is no, your energy, all the energy of whatever you're doing is being sucked because of your expectations. वो energy drain हो रहा है. Expectations, material is, can I say? Material, non-material फर्क नहीं पड़ेगा यार. Expectation है. To achieve it, because because while I would meditate, no, I would used to see images like, the goddess images, the angels, and now I don't see anything. And now I don't, because you expect to see it. I just want to go to that point. That is my expectation. Can I tell you one thing? Let me tell you a very honest thing. एक second. एक बहुत honest चीज आपको बोलती हूँ मैं आज. 4 years back, I stopped seeing anything through my clairvoyant senses. Yes, I do. Anything. And मैं बहुत परेशान हो गई थी. चक्रास के कलर तक नहीं दिख रहे थे. ये कैसे हो सकता है? For somebody who could see visions like any question आया, ऐसे vision. How could that happen? And I tried everything. कि वो मुझे vision दिख जाए. नहीं आया. फिर नहीं आया. Then one fine day, I just said, okay, what is wrong with it? क्यों नहीं दिख रहा? ये बता. Forget about क्या करना. Just tell me where am I going wrong? And what came to me was that, to grow beyond a certain point, you need to give up what you expect to receive. Okay. So कभी-कभी हमारी expectation हमें limit करती है. Because what we are supposed to get from our work is beyond the scope of our expectation. And because we have a certain, it's like, 1 liter की bottle के अंदर 3 liter पानी भरना. पता ना? 1 liter bottle expands. You can't, it will burst. Yes. The same way, if you have an expectation of 1 liter and God wants to give you, or the divine wants to give you 3 liters of worth of result, he can't. They can't give it to you. So let that expectation go. वो दिन था और आज का दिन है. Even today, when I sit down for a reading also, I don't have the expectation that I will see something or I will get a reading. I only sit down with this one thought in mind that whatever comes out of my mouth should be the divine guidance and nothing else. And the rest, whatever comes out, is their own channeled message. So trust me with this thing. Let go of this expectation. You will start getting results very soon.
Don't do it as an experiment, do it with full faith. Whether it is spiritual or materialistic. मैं कुछ क्वेश्चन पूछ Everything. कृष्णा, please mute करते रहो लोगों को. Whether it is spiritual, emotional, mental, materialistic, anything. Let go of the expectation. Don't expect. Thank you, Taranjeet. Sapna Sood Goel, can I have your question? गुड इवनिंग मैम. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ में कब राइज करूंगी मैं? तो हम देखिए, कब तो जिंदगी बहुत लंबी होती है, तो हम कब इट मींस कि एक गोल है, वो तो पता है, राइज वो मन नहीं भरता है, यहाँ पहुंच के तो वहां पहुंचना है, बट एक लेवल तक अभी क्या होता है 99 पर आके चीजें What do you want? Specify. Name, fame. You want name and fame. So I'm going to ask if you will start achieving your goals within this year. Okay? Okay. थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ भाई, अंदर से फायर. Okay. And Okay. yes, if you increase that fire within you, so fire means passion. Fire, Yes. karo ya maro wala spirit. Okay. You'll start getting results. And yes, this year you should see a very stark growth in your business or whatever you are doing. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Preeti Mittal. Good evening, Shweta. Good evening, जी. मेरा एक सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा मैं धीरे बोलती हूँ, तो यू जस्ट लिसन टू मी, ओके? ये है कि मैं बहुत मल्टीपल काम करने वालियों में से थी अभी तक, लेकिन कुछ मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम हुई है ब्रेन सेल्स की, कि दे हैव स्टार्टेड डाइंग and you cannot replace them, cannot improve them. That is the medical outcome of all the tests. I have the name also. तो उसकी वजह से जैसे कुछ मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे अंगूठा है या कुछ है, so they have started trembling. और वो trembling से जो है मेरे हाथ से चीज गिर जाती है, या मैं कई बार चलते हुए किसी वजह से गिर जाती हूँ, काफी गिरती हूँ, तो मतलब इट इज लाइक गिरती पड़ती रहती हूँ टाइप्स. तो अभी तक तो भगवान ने सुपरफिशियल चोटें दी हैं, एक्सेप्ट वन टाइम फ्रैक्चर. और मैंने आई हैव एडजस्टेड माई सेल्फ टू माई प्रॉब्लम, कि जैसा है आगे बढ़ो, वेरी पॉजिटिव आउटलुक अबाउट थिंग्स. मतलब सितार बजा नहीं पा रही, 48 years आई प्लेड सितार, नहीं बजा सकती, तो चलो ये क्या आता है यूट्यूब पे कोई पियानो बजा लो या कुछ भी कर लो, है ना? गाना नहीं, मतलब जो भी लिमिटेशंस हो गई हैं उनके साथ मैं चलती हूँ, और इसीलिए मैं इतनी लैंग्वेज सीखती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज इम्प्रूव करती है कंडीशन को थोड़ी. तो क्या अगर मैं ये प्रोग्राम करूँ, तो डू यू थिंक कि ब्रेन सेल्स का कोई इम्प्रूवमेंट है? वैसे बहुत पॉजिटिव हूँ, कभी रोती नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई ऑलवेज सी नाइस थिंग्स अबाउट इन एवरीबॉडीज लाइफ. Okay, so Preeti ji, see, one thing I can tell you is, for your question, will Mokshapatta help you? So Mokshapatta as a whole will, मतलब board की reading के हिसाब से बता रही हूँ. So Mokshapatta as a reading would, as a modality would help you at a spiritual and emotional level. लेकिन आपको वैसे मैं बताती हूँ, आप श्रीम बीज मंत्र जो होता है उसको जितना लिख सकते हैं लिखिए. This will help your neurons start developing again. क्या कौन से मंत्र हैं ये श्रीम बीज मंत्र नहीं है, लक्ष्मी बीज मंत्र, श्रीम. आप परसों सुबह ज्वाइन करिएगा 10:30 बजे. आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट मोर, एंड वहां पर आप इसको सीख के कैसे यूज करना है सीख लीजिएगा परसों मेरे से, एंड यू स्टार्ट यूजिंग दिस विल हेल्प यू विद योर न्यूरॉन्स एंड रीडेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स. बिकॉज मैं
योगा काफी करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से करती हूँ, तो ये सब आ गया। एंड एक ये मैं इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। देखो, कैन यू सी समथिंग? या मंडल बेसिकली। हाँ, मंडला। आप श्रीम बीज मंत्र पे वर्क करिए, दैट विल हेल्प यू, बिकॉज श्रीम हैज आल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन जिनके जो ऑटिज्म है, जिनको मेंटल और न्यूरॉन्स का न्यूरो प्रॉब्लम्स होते हैं. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. Mokshapatta will give you a lot of spiritual help and a lot of emotional help. But Shreem Beach Mantra will give you a lot of growth in your neurons and neuro problems. ये तो बहुत अच्छा बता दिया. तो मैं जरूर आपसे संडे को, ये 10:15 का शायद टाइम है ना? 10. हाँ, वो 10:30 स्टार्ट करेंगे, 10:15 तक पीपल कैन लॉग इन. हाँ, तो आप वो भेज दीजिए उसकी. हाँ, मीटिंग वो आपको कृष्णा भेज देंगे प्रीति जी. मेरे पास भी लास्ट मिनट ही आएगी, आप उनसे ले लो, उनके पास पहले आती है. हाँ, तो बस उनको कह दीजिए भेज देंगे. इतनी सारी और भी आई हैं सर. कृष्णा भेज मैम देना. मैं अभी चैट में डाल देता हूँ. हाँ, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा. अच्छा, थैंक यू सो मच. सरोज गुंजियाल, थैंक यू. सरोज गुंजियाल. So I can leave now. Yeah, you can. Thank you for joining in. Please unmute Sarojji. While Sarojji is answering, was opening, connecting with us on her audio, एक chat में question है दलजीत सिंह जी का. My question is, will I gain name, fame and growth in my career in occult field? And will I be financially successful? So we'll just ask for your financial success. Financial success होगी तो बाकी सब अपने आप ही आएगा in 2022. Yes, 2022 will be a year of growth and improvement for you. Saroj ji, आप unmute कर लीजिए please if you want to ask your question. Very quickly कर लो please. बहुत सारे question और है. Sanchita, what is your question? Please tell me. Hi, ma'am. Hi. So actually, I tried to connect you for a long. Anyway, so I am a. वही मतलब बार बार लॉग आउट हो जा रही है. Then I couldn't connect. Okay, बताओ. Now you can see me, right? No, I can't see you, but I can hear you. Okay, fine. Okay, so no problem, ma'am. First of all, ma'am, actually, I am into this modality for quite a long. So मुझे ये जानना है. I am a professional tarot card reader and healer also. So मोक्षपात्र मैं बहुत दिन से ही I want to learn. मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक ऑकल्टिज्म में अगर मोक्षपात्र या फिर कोई भी मॉडलिटी हम लोग यूज करते हैं, कोई भी मॉडलिटी, सो इसमें तो साइकिक एबिलिटी का ही मेन बात होती है. साइकिक एबिलिटी ग्रो हो जाती है जब आप काम करते हैं इस पे. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. ऑकल्ट में जितना काम करोगे साइकिक एबिलिटी उतना बढ़ेगा, कम नहीं हो सकती. जी. So when already you are into this process, okay, so मोक्षपात्र के साथ आपने बोला कुछ वैदिक ऐसा कुछ कनेक्टिविटी है. So is it related to astrology? It is not related to astrology, but इसमें थोड़ा बहुत मेंशन प्लैनेट्स का है, थोड़ा बहुत मेंशन न्यूमरोलॉजी के नंबर्स का है 1 to 9 का, पर ये है वेदों के बेसिस पे. Vedic basis is not astrology only. Vedas is the core of philosophy of living and life. So it talks about from that perspective. Right. So it is based on the Vedic science. Yes. Fine. Okay, ma'am. So now can I ask one question then? Very fast. पूछो. Sure. बहुत सारे लोग वेट करते हैं. Just tell me that what is my future in my occult science. That's it. That's my question. So how will occult science be for you in 2022? Sure. It's going to give you a lot of happiness because हम happiness की box पे हैं. Okay. Fine, ma'am. Thank you so much. It's a blessing. सरोज गुंजाल बोल रही हूँ मैं सबके questions ले रही हूँ. Please hand raise करें. Please, Mosmi Banerjee. जिनके कैमरा वाले पहला choice उनका, पहला option उनको दूंगी because I can see them. Please guys, patience. मैम मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था ना.
अच्छा, एक मिनट मौसमी जी रुक जाइए। सरोज जी आप फटाफट अपना क्वेश्चन दे दीजिए। कंप्यूटर काम नहीं का, फिर लैपटॉप इससे किया बना। अच्छा, ये मेरी बड़ी बेटी के साथ मेरा क्या कार्मिक अकाउंट है, ये जानना चाहती हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम है आपको उनसे, मतलब उनके साथ में? हाँ, हमारा मतलब कि ऐसा लगता है। ओके। आपकी एल्डर डॉटर कितनी बड़ी है? 23 ईयर। देखिए, जो मेरे पास में आ रहा है रीडिंग, वो ये आ रहा है कि आपके और उन, मतलब वो आपसे स्पेस चाहती हैं और आप उनको एक वही चीज नहीं दे पा रहे हैं, स्पेस टू थिंक एंड स्पेस टू ग्रो एज अ पर्सन। कहीं ना कहीं आपके मन में जो है, जो आप सही मानते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो उसी रास्ते चले, एंड दैट इज व्हाट शी डजंट वांट। सो इट्स नॉट अ कार्मिक पैटर्न, इट इज अ नीड दैट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। उनको थोड़ा स्पेस दीजिए खुद की तरह ग्रो करने, दैट विल हेल्प, एंड वो आपका रिलेशन भी इम्प्रूव करेगा। अगर आप उनके पीछे पीछे करते रहोगे, अपने हिसाब से उनकी लाइफ चलाने की सोचेंगे, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी एज अ रिलेशन, एज अ मदर डॉटर पेयर। सरोज जी आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। यस मौसमी जी। थैंक यू। Shweta ji, good evening. Good evening. And first of all, I must compliment you on your divine smile. It's very sweet. Thank you. Okay. And my question is, like, we are planning to open a school in our village, in our native village, to help the children to get the modern education. So, will I be successful in that? Yes, it will take time. But एक चीज याद रखिएगा, one small request there, that when you start building the school and you start with this education, never make it about yourself. जब तक आपका इंटेंशन रहेगा ना कि आपको सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है या किसी सर्विस में रहना है सोसाइटी की, मैनकाइंड की, तब तक ये आपको सक्सेस देगा। लेकिन कहीं पर भी अगर ये मैं का फैक्टर आ गया, तब वहां जाकर आपको अड़चन मिलेगी। Because the only reason why it will be successful is because you are working for service. Yes, yes. So it is like it will be fulfilled in 22 only? It will take, it will not be finished in 2022, but it will start. It will start. Project will start, things will start happening, but time लगेगा थोड़ा सा। Okay, thank you so much. Thank you. तो क्या तैयार? पुष्पा खैतान। Hi Shweta, it was a nice session. Thank you so much. I really enjoyed it. Thank you. I have a personal question, that is, I have learned Vastu Shastra. Some voices are coming in the middle. आपके बैकग्राउंड से आ रहा है कि किसी और के से आ रहा है? Let me just check. No, somebody else, not here. अब आप बोलो, I think mute हो गए सब. Yes. Yeah, I have done my Vastu Shastra course many years back, but I'm not able to do actually like help people. My main intention was to help people, and since it's an ancient science, I want people to be using that for their benefit, but that's not happening. Okay. So you want to know what is so stopping how you should I from go using about it? it? Okay, well, how should you? Sorry? What do you need to do to start on your journey to help people through Vastu Shastra, right? Yeah. Okay, so somewhere or the other, you need to expand on your knowledge base. Whatever base you're carrying is still incomplete, number one. Number two, knowledge सिर्फ वास्तु के बारे में नहीं. Knowledge also about applicability in people's life. How to make it more applicable in their lives. देखिए, वास्तु वगैरह के साथ एक चीज होता है कि टेक्निक्स होती है, रेमेडीज होती है, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनसे कैसे कनेक्ट करना है, ये भी नॉलेज के क्षेत्र में आता है.
So you need to work on growing your own data, your own base of knowledge, of connection, of application. Rebrush it first and then start again. You will get the result that you want. Okay. Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Dr. Sonal Gaur. Yeah, hi Shweta ji. Thank you so much for such a lovely session. I don't know why, but psychically I always have this, attraction or affinity towards Mokshapatta. I always wanted to know about it, and you explain it very beautifully today. Thank you so much. So yeah, so my question is like, I want to know what changes I can do to overcome my professional instability. एक मुझे बात बताओ, आप कहाँ पर अटके हो लाइफ में? प्रोफेशनली में कौन सी सोच है आपकी जो आपको ऐसे पकड़ कर रखे हुए आज? Because there is something which is binding you very strongly, and that's your own belief about yourself. Okay. That is the only thing that is stopping you. That is basically like, it's like pulling you towards gravity. नीचे ला रही. Okay. वो एक कोई belief है, एक कोई सोच है about you yourself, about your profession. It could be about a certain position that you want to attain, or about your own knowledge base. कि भाई मेरे पास इतना है तो I'm good with it. Something is there, one single belief which has blocked you and which is pulling you back. If you can just let go of that belief, no, it will work out. See, now the fact is, वो belief आपके साथ इतना रह चुका है कि somehow ये भी मुझे लग रहा है कि it's become normal for you. So what I would actually recommend is, no, if you meditate, if you follow meditation and all, sit down one day just with this one question. Okay. Which belief do I need to let go? Right. Then you will get your answer. Don't ask उसके आगे कुछ भी, just belief. कौन सा मेरा belief जो मुझे रोक रहा है, मेरे को बता दो. And उस दिन मिलेगा तो अगले दिन मिलेगा, नहीं तो अगले दिन मिलेगा. Just keep on questioning that when you sit, without the expectation कि answer उसी वक्त मिल जाएगा. And that is the one thing that you need to change. Right. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Paramjeet ji. Hello, ma'am. Hello. Very good session, ma'am. I like it very much. Thank you. मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है मेरे हस्बैंड के बारे में. हेलो. हाँ, tell me your question. हाँ मैम, मेरे हस्बैंड काम करते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है काम में. फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? आपके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और ईगो भी बहुत है उनमें. यस मैम. दैट इज स्टॉपिंग हिम. ईगो एंड एंगर. अच्छा, गुस्सा और ईगो कम करना पड़ेगा. जब मैं आता है ना, वहां से हम निकल जाता है. और सृष्टि में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए देयर आर टू एस्पेक्ट्स, मी एंड ऊपर वाला. हाँ जी. तो वो दो एस्पेक्ट अगर अलग हो जाए तो मैनिफेस्टेशन नहीं होती, क्रिएशन नहीं होती. ईगो एंड प्लीज आस्क हिम टू वर्क. Okay, ma'am. He's listening. Ma'am, one more question. No. Abhi, please, not possible. 17 people are there and 9:30 Okay. tak khatam hoga aaj. Thank you so much. I understand. Yeah. Thank you. Yes, Radha Purohit ji. Radha Purohit. Okay, she's not there. Meetu Agarwal. Hello, ma'am. Hello, I'm here. I'm Radha here. Just wait. Somebody... Just wait. Okay. Yes. Hello, ma'am. It was nice knowing you. मोक्षपत्र मेरे लिए बहुत ही नया था. मैं कभी इसके बारे में सुनी भी नहीं थी. And it's really nice. I just wanted to ask a question regarding my health issues. कुछ ज्यादा ही हो रहा है, एक के बाद एक आ रहा है. तो I just wanted to know about it कि रीजन क्या है या फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन? नहीं तो एक चीज बताइए, रीजन चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए? आई थिंक आई विल गो फॉर द सॉल्यूशंस. ओके.
आपको चीजों का बहुत शौक है? चीजों, कैसे चीज मतलब? चीज मतलब घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का, यस, सामान। यस, तो यस। ये जो इच्छा है ना इतनी ज्यादा सामान बटोरने की, सामान बटोरने की तो नहीं है, लेकिन हाँ, आई लाइक गोइंग आउट एंड शॉपिंग। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज लेकर आओ अपनी लाइफ में खुद। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वर्ल्ड आउटसाइड, नो, लुक व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन यू। इट इज नॉट अबाउट, ये जो मेडिकल इलनेस है ना, ये इमोशनल है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल ऑर्गन्स नेसेसरीली। ओके। कंप्लीशन आप बाहर घर के ढूंढ रहे हो, शॉपिंग में ढूंढ रहे हो, वो कंप्लीशन अपने अंदर ढूंढ रहे हो। Connect with yourself. That is the first thing that you need to do. And secondly, get into something like naturopathy या aromatherapy and all, जिससे आपके chakras cleanse होंगे. This will help you a lot. Okay, okay. Ma'am, like for the last 2 years, I've been involved in many spiritual things. Like तो changes बहुत आए हैं. It's not like that. फिर भी health issues are continuing. देखो, आपको मैं एक बात बोलती हूँ. कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसकी हेल्थ परफेक्ट हो, ठीक है? बट हमारी जिंदगी में ना दो चीज सबसे जल्दी खराब होती है, हेल्थ और पैसा। और यही दो चीज सबसे आखिरी में ठीक होती है। राइट। तो इसका बेसिक क्या होता है ना, लगे रहो, मुन्ना भाई वाला काम है, लगे रहो अपने काम पर। देयर विल बी अ डे व्हेन इट विल वर्क आउट फॉर यू। बट जो कंप्लीशन, जो चीजें आप बाहर से ढूंढ रहे हो ना, डिजायर्स फुलफिल करने की, वो अपने अंदर फुलफिल करना स्टार्ट करो। आपकी आधी प्रॉब्लम इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। Okay, thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Yes, Radha ji, Radha Purohit. Session. Yeah, I'm in a fixed state right now. I want to know what field should I go. I want to do some business or sort. My husband passed away 5 years back. Now I'm in a state of fix. So what are the business options that you have in front of you? Give me 2 or 3 options. I'll tell you which one. No, actually, I wanted to do business of manure, organic manure. Okay. So a काम है, organic manure would be good for you. It will be profitable for you. Also, one small suggestion: अपने sacral chakra को पे balancing पे work करो. Your sacral chakra needs work. Because sacral chakra जो होता है ना, this is about emotion. This is about emotional balance in life. This is about my own belief about myself, my relation with myself, and my relation with the rest of the world. It's also about fluidity, flexibility, and creativity. Somewhere or the other, तो आपका sacral हिला हुआ है बहुत ज़्यादा. Sacral पे work करो थोड़ा सा, and organic manure का business will be successful. When it will be? That अभी later, if I'll have time, I'll answer. Okay, I'm just taking one question for people. Okay. Thank you. Neeru Soni. Neeru Soni. Hi, ma'am. Thank you, ma'am, for the beautiful session. बहुत ही अच्छा लगा, knowledgeable session था आपका. जो थिंक हमने सीखी आपसे ये मोक्ष पात्रा. और मैम मैं अपने बस वो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, वही पूछना चाह रही हूँ. आप एक बार मेरे को बता दोगे, बिकॉज चार्ट में इतना कुछ आ रहा है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा है. आप मुझे क्वेश्चन बता दो अपना. मिस स्पिरिचुअली में एक तो मैं ये पूछ रही हूँ कौन सा पाथ लूं. जैसे मैं कई डाइवर्जन्स मिलते हैं ना, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ. आप दो डाइवर्जन दो, मैं उसमें से आपको एक चूज करके बता दूं. तो देखो, जिंदगी में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज. अभी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का तो मेरे पास यहाँ पे कोई वो नहीं है चिट निकालने का सिस्टम, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटीज मेड बाय mankind, not God, no? So give me 2 options. I'll give you the preferred one. फिर भी लेकिन सब पाथ लेके तो एक साइड पे जाते हैं. आई नो, जाना तो हमने एक जगह ही है, बट फिर भी थोड़ा सा आप ही सजेस्ट करो मुझे. You will give me 2 options. मैं आपको उसमें से एक सजेस्ट कर सकती हूँ. See, this is not पाथ का choice is yours. I can just guide you. जैसे एक तो गुरु का पाथ होता है, लोग जैसे गुरु जी को फॉलो करते हैं, चलो उधर. ये मैं जैसे यहाँ पे गॉड को, जैसे हमारे होते हैं शिव जी. भगवान से तो किसी भी नाम से आप किसी गुरु या भगवान को बुलाओ, it is the same thing. The board will not answer such a question. You have to understand, for the board all divinity is one. ये क्वेश्चन ही गलत है. ये क्वेश्चन तो मैं पूछ ही नहीं सकती. तो भगवान मानो,
भगवान तो भगवान है, उसकी एनर्जी तो वही रहेगी। It means मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ तक है, क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं, ये मीन्स आप बहुत पता है। चले जी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस साल थोड़ी ठंडी रहेगी। वन ऑफ द रीजंस इज कि आप दूसरों को देखते हो और आप ये सोचते हो मुझे भी वो ग्रोथ चाहिए जो उनको मिल रही है। किसको? मुझे भी वैसा, आप जैसे लोग आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनको देखोगे इस साल और सोचोगे कि दिस इज व्हाट आई वांट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस। कृष्णा प्लीज म्यूट अनम्यूट करके जाओ। सो जब हमारे मन में, जब हम अपनी डेस्टिनेशन को किसी और के नजरिए से देख के चूज करते हैं ना, तब ग्रोथ नहीं मिलती। इस साल कुछ आपका ऐसा ही रहेगा, आप लोगों को अपने चारों तरफ देखोगे और ये बोलोगे मुझे वहां पहुंचना है। तो अगर आप वो एस्पेक्ट हटा दो और आप सिर्फ इस फोकस से वर्क करो कि मुझे मेरी ग्रोथ से मतलब है और जहां मुझे मेरी ग्रोथ लेके जाएगी मैं वहां पहुंचूंगी, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप दूसरों को देख करके बोलोगे ना कि मुझे उसकी मतलब जैसे वो गुरुजी को फॉलो करे तो मैं भी कर लेती हूँ, वो उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। या मैं शिव जी को फॉलो कर लेती हूँ, मैं भगवान की आराधना करती हूँ क्योंकि कोई और कर रहा है, तो वो नहीं मिलेगी, वहां ग्रोथ नहीं। ग्रोथ अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इस साल चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जिससे आपकी आत्मा रेजोनेट करती, योर सोल रेजोनेट्स, राइट? हीना सोती, कैन आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज? हेलो श्वेता जी। हेलो जी। मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन करा था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मोक्ष पाथ के बारे में। मैंने You सारे can watch the recording, Hina. The recordings will be shared in all the groups थोड़ी देर में, आप वहां से रिकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू सो मच। और मेरा क्वेश्चन मेरे लिए है, एक्चुअली मैं पिछले 5 साल से बहुत ट्राई कर रही हूँ फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, बट मैं थोड़ा स्टार्ट करती हूँ फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है, रुक जाता है। मैंने रेकी हीलिंग करी थी, दैट वाज डूइंग वेरी गुड, अच्छे रिजल्ट्स थे। उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी भी करी बट उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। टैरो लर्न करती हूँ, वो स्टॉप हो क्वेश्चन जाता क्या है। है हिना? क्वेश्चन क्या है? ये जो पूछना क्या मतलब मैं स्टार्ट करती हूँ फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ फिर वो रुक जाता है सब कुछ मेरा। तो आप ये पूछना चाहते हो कि वो क्यों रुकता है, या ये पूछना चाहते हो कि मैं क्या करूं जिससे वो मैं रुकावट क्या करूँ, ऑब्वियसली मैं क्या करूँ। पहली बात तो अगेन डिल्यूजन आया। डिल्यूजन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। वंस अगेन ऑफ व्हाट यू वांट टू एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे किसी भी टाइप की, उस दिन रिजल्ट मिलेगा। जब तक ये सोच के करोगे कि मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे, आपको एक चीज, मैं ये नौकरी पे जाऊंगी तो 10,000 रुपए मिलेंगे, है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। वर्क निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम भावना से करोगे वो आपको रिजल्ट देगा। सो जितनी बार आप किसी के लिए हीलिंग कर रहे हो, लेट मी प्लीज कंप्लीट, जब आप किसी के लिए हीलिंग कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, उस टाइम पर आपको आप टोटल इंटेंशन क्या होना चाहिए? मुझे इस इंसान की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। देखो, पैसे के लिए करना है वो ठीक है, और वो करना भी वैसे ही चाहिए, लेकिन हमारा जो फर्स्ट इंटेंशन होता है ना, फोकस शुड बी द पर्सन, नॉट द मनी। ओनली देन विल मनी कम। जहां सर्विस होता है, जहां परमार्थ होता है, वहां पैसा झक मार के आता है। सो आपका पहला इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ किसी की लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर रहा है, किसी की जिंदगी में वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है। जब आप उस भावना से काम करोगे तब आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगी, बिकॉज ये बाय प्रोडक्ट है। ऑलवेज रिमेम्बर। थैंक यू। यस पल्लवी जी। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. I was waiting for such a long time. Okay, my question is, I just want guidance. What is the spiritual energy giving? Want to give me a message or any indication where I need to grow in my life? When you see people around you, जब आप लोगों को अपने आसपास देखते हैं, जो उनको उनके पास है उसको देख करके ये मत सोचिएगा why do I not have this.
या आई विश दैट दिस एस्पेक्ट, एंड ये ना सबसे बड़ी चीज होती है, ये मटेरियल लेवल पे नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल लेवल पे है, where you desire that spiritual competence, that knowledge, or perhaps that intuitive ability. It could be anything on that level also. Because मेरे पास ना, मैंने 2 डाइस चली, दोनों बार आपका envy और avarice आया है. When it is envy, no, somewhere or the other, हम किसी और को देख करके वो चाह रहे हैं जो उसकी लाइफ में है, और हो सकता है ये हमारा परसेप्शन हो. See, I'm telling you have to question yourself, because initially जब हम ऐसी चीजें पूछते हैं ना, मेरे को कोई बोलता है ना envy, तो हमको लगता है मेरे पास तो भाई नहीं, मैं किसको देख के सोचूंगी. अगर ये आया है तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी लाइफ में फिट होता है, दिस यू विल हैव टू सी. समटाइम्स इवन थिंकिंग नो, कि जैसे सदगुरु है, कि एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जैसे XYZ सारी जिंदगी अपनी भगवान में या सत्संग में बिता रहे, मैं बताऊं, कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट ऑफ एंड. हम उसे नेगेटिवली नहीं सोच रहे हैं, बट जो हम सोच रहे हैं उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, दैट इज द एनर्जी ऑफ एनवी. सो दैट यू विल हैव टू फिगर आउट कि कौन सी ऐसी चीज आप सोचते हो जिसमें एनवी कहीं दूर दूर से आकर कनेक्ट हो सकती है. किसी को like an example, take example. I just gave it to you that sometimes you see people who are very evolved and we say, काश यार मैं कब वहां पहुंचूंगी, कब मुझे उतना नॉलेज आएगा, या कब मुझे उतना ग्रोथ मिलेगा. इवन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में हम कई बार अपनी लाइफ में एनवी क्रिएट कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट. Okay, so that it means कि मतलब I'm taking it in a negative way somewhere or the other. You are not taking it. You are looking at somebody else. Yeah, as like what we can say कि, for example, okay, this person is like so knowledgeable about it, or I wish I had that knowledge. When will I? I wish I had. Yeah, I'm trying to grasp that knowledge. I'm trying to learn new things. What you need to understand is that this is the energy which is stopping you. क्योंकि आप जिधर हो, आपकी ग्रोथ उस हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से हो रही है. उनकी ग्रोथ उनकी जर्नी के हिसाब से हो रही है. तो the minute you will let go of this, you will again start improving. So this is the one point you need to work on this year. Okay, great. Definitely. Surely. Thank you. I never realized it. I was always thinking, okay, I'm like putting someone as my idol and I'm working towards that. Okay, great. Definitely. Thank you so much. चीज बताती हूँ, एक टाइम था when I used to say, no, मेरे को अपनी mentor की तरह बनना है. And then I realized, नहीं यार. And then one day the same thing happened and you're like, why is envy coming? And मेरी आदत है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ भगवान के पास या आंसर, एंड आई लीव इट. आंसर अपने आप आता. 2-3 दिन बाद मेडिटेशन में आया, व्हाई डू यू वांट टू बिकम योर मेंटर? व्हाई कांट यू बी द बेस्ट यू? शी कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी हर. तो yeah, definitely. So that is the only thing. So कभी-कभी किसी को पेडेस्टल पे बिठाना भी अपने में एक ऐसी ईर्ष्या पैदा करता है, जो हमें तो लगता है कि वो गुरु को मान रहे हैं, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमको हमारे ईश्वर से, इष्ट से दूर ले जाती है. Okay, got it. Definitely. I'll definitely love to practice this. Definitely. Thank you so much. I'll definitely do it. I'll get back to you on this and I'll share my changes if I had any. Surely. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Hello. Yes, जी. मैम, पहले तो मैं आपसे थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपका स्विच वर्ड जो मैंने वैदिक किया है उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे हस्बैंड के साथ भी मैंने संबंध अच्छे से, उसका मीन्स मेरे हस्बैंड का नेचर भी इतना अच्छा मैं चेंज किया है वो स्विच वर्ड से. थैंक यू. अभी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ. मेरे हस्बैंड की बात है कि मेरे हस्बैंड नाइजीरिया में है, तो उनको अभी दुबई में आना है, जॉब चेंज करना है, तो क्या वो पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, और इस साल में पॉसिबल है, नियर फ्यूचर में. थैंक यू. आप स्विच वर्ड के बारे में You're very welcome. बहुत अच्छा लग रहा है. उससे मेरे हस्बैंड का नेचर एकदम से मैंने उसको वो किया है. इतना परफेक्ट. हस्बैंड पे अगर हस्बैंड ने प्यार कर लिया तब तो वो डन डील है यहाँ पे. Thank you for sharing. Thank you. Yes, ऋषभ जी, ऋषभ जैन.
Yeah, hi ma'am, Hi. Rishabh this side. Yes. एक चीज मैं क्वेश्चन बोलने से पहले बताना चाहता हूँ, the first time I'm asking any, astrologer a question, so I'm a little scared also. So question is very simple. So around 1.5 years back, I moved to my family business and I quit my job. And now I'm still, wondering if that was the right decision. And I'm thinking if I should get back to job. So can you, Okay, so you want to know guide if me? going back to a job is better for you, right? Yes. The right path for you. Yes. Nahi, Rishabh. You are at the right time. You're at the right space, doing the right thing right now. Perhaps आपको ये लग रहा है कि जॉब में जाकर आपको better growth या better prospects मिलेंगे, but ये short term prospects हैं. Currently जहां पर हो वहीं रहो. इस वक्त don't change. Stick to your path. For at least for this year. इस साल कोई shift मत करिएगा. Okay, that's very strong. You were saying. No, because you know what has, I'll tell you one thing. When it comes to answering in a yes or a no, what comes is very clear, very, very clear. It's when we come to interpretations of, how, what, when, and where. Then there are multiple things, because then I also get my own guidances. But the one thing I see for you is, is saal jahan ho wahi raho, because it's like, the grass is always greener on the other side. So आपको उसमें जो prospects दिख रहे हैं ना, वो आपको long term result नहीं देगा. वो 6 महीने साल भर तो दे देगा, लेकिन what about after that? जिंदगी तो long term जीनी है ना. So जो मुझे job के prospects में दिख रहा है, वो बहुत short term result दिख रहा है. Current state of your life. So at least 1 साल तो अभी रुक जाओ. ये साल कोई change मत करो. Next year, again, if you want to think about it, then again explore the idea before taking the jump. Explore करना, because इस साल तो not suggested at all. मतलब मेरे को 2 boxes आपके लिए मिले और दोनों boxes negative हैं. So I would never, say that you do it. Okay. Right? मैम इससे और भी कुछ, चलिए ठीक है. कुछ तो बहुत कुछ करते हैं. आज नहीं यार, देखो मेरा बेटा भी आ गया है मम्मा मम्मा करते हुए. आज नहीं, आज मैं पहले ये 10 क्वेश्चन आंसर कर दूं. आप बाद में बुकिंग मतलब सेशन बुक कर सकते हो, and then one-on-one I can answer whatever you want, but आज मेरे को मत रोकना है. Sir, I'll do one question for everybody and just close the session. Okay, ma'am. Thank you. Thanks for Thank you so much. Thank you. Priya. Unmute कर लो. Unmute करो आप. Please unmute yourself. Hi, ma'am. Hello. मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है बहुत कुछ. प्रिया, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे? मेरे को यहाँ नेटवर्क का थोड़ा ब्लिप हुआ था. हाँ मैम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उससे मैं बाहर नहीं आ रही हूँ. What is my problem, and I want to know the solution about my problem. So I will only give you the solution. Just taking one question. So I'll quickly give you the solution. Problem solution दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है? Okay, ma'am. एक तो अपना सेक्रल चक्रा पे वर्क करो प्लीज. सेक्रल चक्रा का सेक्रल चक्रा बैलेंस करो, बिकॉज एंड अनदर थिंग इज नो, अपने आप को बहुत रिजिडली मत होल्ड करो लाइफ में. रिजिड मतलब इमोशनली भी, हर शौक को पूरा नहीं करना. करते हो अपने साथ ऐसा, जो मन करता है वो नहीं करते हो बिल्कुल भी. हाँ मैम. थोड़ा थोड़ा अपने मन की सुन लो. जब अपने आप को ऐसा रिजिड होल्ड करोगे ना, तो वो रिजिडिटी पैसे में भी आएगी, और पैसे में भी रिजिड ऐसे मुट्ठी बन जाएगी, तो पैसा नहीं आएगा. थोड़ा थोड़ा ढील दो. जो आपका मन चाहता है वो खाओ. कोई ऐसी चीज देखो जो आपको पसंद आती है. कोई ऐसा फ्लावर रखो, या ऐसे एसेंशियल ऑयल जला लो जो आपको, जिसकी सुगंध अच्छी लगती है. व्हाटएवर यू वांट टू. बट अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी ये सब चीजें ना लेकर आओ, क्योंकि लाइफ में ना पैसा एक ऐसी चीज है जो तब आता है जब मन खुश होता है.
और अगर अंदर से आत्मा और मन खुश नहीं है ना, हम पैसा नहीं कमा सकते। डर के कमाओगे तो पैसा भागेगा, और खुशी होके कुछ करोगे ना, खुश होके, तृप्त होके, मनी विल कम टू यू। प्रिया। Okay, ma'am. थैंक यू प्रिया। Thank you, ma'am. थैंक यू। शिखा, शिखा जैन। Excuse me. Hi, I'm actually in the market. I was just waiting for my turn, and I also have my kid along with me. There's just one question, Sweta. I have been into communication for last 15-20 years, and occult is also driving me crazy. So, Yeah. which one of the two should I choose? So occult is one question, and the occult is one choice, and the other is Communications, branding, and branding and communication. I'm also into training. So, how? You tell me. ब्रांडिंग कम्युनिकेशन तो अभी मत करना, नॉट वर्केबल। Okay. How is it in occult? I mean, would I? ट्रेनिंग अभी सबसे बेस्ट है आपके लिए, Okay. और अकल्ट भी सेकंड बेस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रिकंसिडर अकल्ट आफ्टर 1 year, ब्रांडिंग कम्युनिकेशन नो, नॉट एट ऑल। Training is something that I should pursue. You should focus on right now, at least for this 1 year, focus only on training. This 2022 you're talking about, and maybe 2023 I learn everything and then go all hog in occult. Exactly. Thank you You're so much. It's a lovely session. Thank and you you so smile like Renuka Shahane. थैंक यू यार, इतनी भी अच्छी स्माइल नहीं है मेरी, बट थैंक यू। Okay, thank you so much. Thank you. Okay guys, last 5 questions I will take now. और जिनके कैमरास ऑन नहीं उनके कोई क्वेश्चन नहीं लेगी मैं। वीनू जिंदल, कैमरा ऑन हो गया। Sorry, and good to see you again, Shweta. Good to see you. The questions are very simple. So I had a very high-paying job which I had to give up in January. So my question is, when do I get my next assignment or a break? Around 6 months every month. 6 months from now? 6 months from now. Okay. Also, one thing that's coming now is don't stop actively pursuing opportunities or promoting or marketing yourself. Because we've come to the box of karma, which means हो जाएगा 6 months में, मेरा dice and also reading है, so 6 months में हो जाएगा, but keep on putting in your efforts. Don't skip on your efforts. Got it. Thank you. Thank you. Yes, Kulbir ji. I have a question about my sister's health condition. What can be done to resolve it? What is the problem? Can you just give me the name of Actually, I mean, we've not been able to resolve it. Her sonography comes okay, but the doctor advised her to go in for a gynae thing. Okay. Tell me one thing, Kulbir ji. Is your sister? मतलब 2 चीजें पूछ रही हूँ, उसमें से कौन सा आप मुझे बता दो, so I can give you a deeper understanding. Is she very controlling and rigid in her personal life, or is she like a doormat? I would say both, but नहीं, दोनों तो एक आदमी अपनी okay. Then let's take the first one. Okay, so you know what? उनका जो problem है, this is coming from over control. That's why, because मेरे को पहले over control ही आया था. I just wanted to cross check it still. Okay, yeah. So one thing is there, you know, when we try to control people ना, हमारी जो अपनी body का nervous system होता है, वो बहुत ऐसे अकड़ जाता है अंदर ही अंदर. So इससे और जो problems होती है, होती है, उसमें से सबसे common होती है arthritis, sciatica. All our, you know, intestines and all our body organs also start getting very constrained. तो कंस्ट्रेंट मेडिकली कुछ गड़बड़ नहीं आता है, और बाकी सब कुछ गड़बड़ आता है. सो वन थिंग शी नीड्स टू अंडरस्टैंड इज कि थोड़ा सा अपना जो ये कंट्रोल है ना,
trying to control everything, trying to इसी दिशा में सब कुछ जाए, ऐसे ही होना चाहिए, उसको उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा. And another thing, chakras balancing पे उनको बोलिए, she needs to work on her heart chakra and her solar plexus. Also one thing, please tell her to do forgiveness. बहुत गुस्सा भरा हुआ है उनमें अंदर, अपने लिए भी और कुछ और लोग हैं उनके लिए भी. Please tell her to release all of it. Please tell her. I'll do that. I'll catch you in your super class then. Yeah. Great being in the meeting. Thank you. Thank you. Vikram Khurana ji. नमस्कार मैम. नमस्कार जी. मैम पिछले 4-5 साल से एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई हैं. उससे पहले तो स्टेबल था और उसके बाद 4-5 साल से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो लॉसेस हो जाते हैं, मेजर लॉसेस. फिर दोबारा करता हूँ तो फिर लॉसेस हो जाते हैं. तो उसका मुझे क्या करना चाहिए, उसका क्या सोल्यूशन है? आप अपनी जो एडवाइस है, जो सलाह है, किससे आप डिस्कस करते हैं? कोई ऐसे हैं जो आपको जो सलाह दे रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है. ओके. सो वन थिंग यू नीड टू डू इज हैव समबडी. जब आप कोई भी काम करें, स्पेशली बिजनेस जाए या कोई सेल्फ वर्क में जाए, उस टाइम पर यू नीड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प टू स्टार्ट दैट बिजनेस एंड रन इट, रादर देन टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली. क्योंकि आपका जो कोर रीजन है वो है बुरी संगत. तो बुरी संगत नॉट कि कोई आपको गलत संगत में है आप, बट जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो उनके हिसाब से, उनके नजरिए से सही है, लेकिन आपके लिए वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या गलत है. ओके. तो आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करें पहले, और उससे जो इंफॉर्मेशन निकलती है, उसकी जो नॉलेज निकलती है, उसके बेसिस पे बिजनेस पहले पूरा प्लान करिए, एक्सप्लोर करिए और फिर आगे बढ़िए, तो आपको सक्सेस मिलेगी. ओके. तो इस साल में सक्सेस मिलने का कुछ है चांस? कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूं मैं? पहले आप प्लानिंग कर लो. अगर प्लानिंग के बाद स्टार्ट करेंगे, पूरी मतलब प्लानिंग, एक्सप्लोरिंग, पूरा रिसर्च के बाद ढंग से, तो आपको इस साल में सक्सेस मिल सकता है. मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, मैं बता सकता हूँ. एक्सपोर्ट्स का अभी नहीं. एक क्वेश्चन विक्रम जी प्लीज. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. सुप्रीता जी. हे श्वेता, थैंक यू सो मच. माय प्लेजर जी, बताइए. मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में पूछना था. इट इज नॉट गोइंग ऑन वेल विद योर पार्टनर और विद योर चिल्ड्रन के साथ? नहीं, विद माय पार्टनर. It's almost 19 years, but still like fights, those things are going on. जो वो चाहते हैं लाइफ में और जो आप चाहते हो ना, उसमें बहुत बड़ा गैप है. And somewhere or the other, was this a marriage जो आप लोग नहीं चाहते थे? दो में से एक जना इस शादी को नहीं चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं था. No, in terms की लाइक चाहना मतलब कि जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना शादी कर लो, तो हम कर लेते हैं. ऐसा आप लोगों में से किसी एक के लिए था मन में? मेरा हुआ था. सो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक और फीलिंग पैदा कर रहा था, अगर मेरी शादी इनसे नहीं हुई होती, then my life could have been better. So it's not, see, अकेले वो फीलिंग अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती है, पर जब चीजें हमारे अगेंस्ट चलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में सही नहीं बैठती है ना, उस टाइम पर ये छोटी सी एनर्जी भी बहुत कुछ बढ़ा देती है. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, whatever, पहली बात तो आपको दोनों को एक ऐसे पॉइंट पर आना है जहां पर आप एक दूसरे को जैसे आप लोग हैं वैसे एक्सेप्ट कर सके. और कहीं ना कहीं जो मन में ये ख्याल है ना कि अगर मैंने हाँ नहीं करी होती या नहीं शादी करी होती, वो चीज पहले मन से हटा, क्योंकि वो इतनी सी जो बात है वो सबकॉन्शियसली आपको बहुत परेशान करे. और उसकी वजह से जब आप कुछ बोलते हैं कई बार, तो आपकी बात में वो गुस्सा आता है. और एक सबसे बड़ी चीज होती है, लोग ना टोन सुनते हैं, लोग बात तो सुनते ही नहीं है. दे लिसन टू द टोन इन विच वी स्पीक एंड रिएक्ट.
तो आधी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की सिर्फ तब खत्म हो जाएगी जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जब ये मान लोगे कि मेरे पास लाइफ का बेस्ट पार्टनर है। बट अभी 19 years हो चुका है मैडम, सो दैट पॉइंट इज नॉट कमिंग अप. It will But come up. still, I'll tell you one thing. The day you let go, I came into this journey, no, and I was at the kagar of a divorce. मेरा 2 साल का बच्चा था, मैं डिवोर्स लेना चाहती थी, मेरा पति मुझसे परेशान था, मैं भी अपने पति से परेशान थी. From that to a point जहां पर मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे के लिए जीते हैं, हमने भी वो करा है. हम तो मतलब घर वर छोड़ने वाले सब ड्रामे कर चुके थे, सेपरेट होना है, नहीं रहना है, ये करना, वो सब हम वहां तक पहुंच के वापस आए हैं ना. तो आप तो साथ में हो. So I can just tell you one thing. वो आपको एक्सेप्ट, उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो कि भाई तुम ऐसा करती हो. अपने मन से वो जैसे है, उनका गुस्सा है ना, उनको उनके गुस्से के साथ, उनको उनकी कमियों के साथ, उनकी अच्छाइयों के साथ ना एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए. बहुत दिक्कत होगी. 100% एक्सेप्ट हम कर नहीं सकते, लेकिन वही एक्सेप्टेंस चाहिए अगर आपको अपना ये रिलेशनशिप ठीक करना है. वो ही चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, वो पॉसिबल है. वो है तो मुश्किल. जब झगड़ा होगा ना, तब कुछ बोलेंगे तो मन करेगा मैं ही कोई बोलते रहते हैं, क्यों बोलते, मैं क्यों करूं एक्सेप्ट. बट द फैक्ट इज वो ही एक्सेप्टेंस आपकी जिंदगी में चेंज ला सकती है. दैट इज द ओनली थिंग. एंड मैं भुगत चुकी हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ उस सिचुएशन की, इसलिए आई कैन टेल यू इट वर्क्स. but I'm accepting most of the things, like whatever is happening. मोस्ट नहीं. हाथी को छोड़ दिया तो हाथी की पूंछ पकड़ ली ना, हाथी की पूंछ भी छोड़नी. इट विल टेक टाइम सुप्रीता जी, बट हो जाएगा. देखिए मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, लाइफ में ना ये जो ख्याल होता है ना, इससे बेटर मिल सकता था. मुझे भी था, मेरी भी अरेंज मैरिज थी. बट वन थिंग आई नो कि मेरे को अपने हस्बैंड जैसा दूसरा हस्बैंड नहीं मिल सकता, और उसको मेरे जैसी दूसरी वाइफ भी नहीं मिल सकती. ये भी मैं मानती हूँ 100% इक्वल 50-50 फुटिंग. वो 50-50 फुटिंग लानी जरूरी है अपने मन में. अपने मन में लाओगे ना, उनके मन में धीरे धीरे अपने आप क्रिएट हो. बट पहले इधर बिल्कुल ठोकर सीमेंट प्लेटफॉर्म की तरह होनी चाहिए. जब तक वो आप नहीं लाओगे वो हो ही नहीं सकता. Going forward, वैसा दिख रहा है कि it will go fine, or yes, it will go fine. But the only two things, see, the two things that I saw was very clearly, one, that one of you was not okay with the marriage. You got into it, but you were not okay. तो आपने बोला आपका नहीं था. You never wanted to get married. The second thing I saw was there is a very big difference of opinion. उनको जो चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, और वो लाइफस्टाइल है, वो बिहेवियर है, वो चॉइस है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती है, वो मिल सकती है. तो उसके अलावा मुझे प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस रामेश्वरी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, मैंने कभी नहीं सुना था इसके बारे में. ये फर्स्ट टाइम है मैम. दूसरी चीज, आपने एक आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में भी बात की है, वो भी आगे आपका फ्यूचर में कोर्स होने वाला है. मेरा एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं ना एक इंसान हूँ और मैं बहुत बहुत डीपली स्टडी करती हूँ और कराती भी हूँ. तो जैसे मेरा अगर मोक्षपाठ का एक बैच चल रहा होगा तो वो जब खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा. वैसे मेरा अभी आकाशिक का चल रहा है. जब वो वाला फिनिश हो जाएगा तब मेरा नेक्स्ट आकाशिक का शुरू हो जाएगा. तो मैम सेम पे हमको लिंक आ जाएगा, सेम ग्रुप पे? हाँ, आप ग्रुप में कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में रहिएगा, वो जो भी कुछ हम नया करेंगे उसमें आता रहेगा आपके पास. ठीक है मैम. मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअली मैम. मैंने ना आई हैव अप्लाइड फॉर मैरिज ओमान एम्बेसी में. जो बॉय है वो ओमान का ही है, और वहां पे मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट उसका आया नहीं है. तो मुझे जानना था कि मतलब ये 2 महीने में आ जाएगा क्या? दो महीने में तो नहीं आएगा. आपको जुलाई एंड तक मिलने का चांस है. बट जुलाई एंड तक भी मिलने का चांस थोड़ा सा वो है, डामाडोल सा है, लेकिन स्कोप है. काम करते रहना, पुश करते रहना. यस मैम. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन. गीता बदेरिया जी, लास्ट क्वेश्चन.
and then I'm leaving. Meera, next session. Thank you, ma'am. I was waiting so long. It was wonderful session, and I Thank have heard the first time this Mokshapatta, and I was waiting alone. Thank you so much for taking me chance. Ma'am, I want to change my house. ये कब कितना मतलब जल्दी से जल्दी होगा ये this is my question. You want to change your house now? There is a difference where you want to buy a house and change. You want to shift to a rented property. So give me a little idea. This is my own property right now, but I don't feel like good here. Like Okay. You want to sell this and move to another property, buy another property. Yes, yes. दो साल. 2 years. So within 2 years it will happen. But now the thing is, no, 2 years का scope ये है कि अभी अगर करोगे तो property मिलने का chance है, but वो property again you will want to change after 2 years, 1 year, 1.5 years. पर अगर आप थोड़ा थावस से देखोगे तो आपको अगले 10-12 महीने में मतलब 8 to 12 months के span में एक ऐसी property मिलेगी which will be there for lifetime. जल्दी में करेंगे तो आपको फिर लगेगा कुछ टाइम बाद I don't want to stay. Okay. So that is the thing. ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप है, बट राइट प्रॉपर्टी का स्कोप 2 साल, मतलब विद इन 2 years you will shift. Okay, okay, okay. Right. Okay. And ma'am, last time I have attended your switch word class, and I am really writing that stream word, and I really feel very good, and I feel growth in my career also. I really admire you, and your smile is really very wonderful. I feel divine energy with you. Thank you so much for taking my question. Thank you. Okay, I'm just taking one question. Vandana ने chat में question डाला. This is the last question, guys, and then I'm leaving. The question is, what do I need to do to earn professionally? So कहीं ना कहीं यार आप जो प्रोफेशंस चूज करते हो ना वो पैसा देखकर करते हो, प्रेस्टीज देखकर करते हो. वंदना, आप प्रोफेशन को इसलिए चूज नहीं करते हो बिकॉज इट इज द राइट perhaps the path for you. So start looking at something जो आपसे resonate करता हो at a very basic core level of your choice, your hobbies, things like that, boys. So अगर आप उस पे वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. Don't look at people, don't look at degrees, don't look at the money right now. First look at that this job should internally satisfy you. If it satisfies you, growth उसमें ज्यादा मिलेगी आपको. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. Now guys, I have to leave. Thank you so much. 10 बज गया है, मेरे को घर में डिनर का काम करना है. If all the questions in the next event, please. Thank you all. I will not answer any more personal questions, guys. Sunday को आप लोग बीज मंत्र के लिए आ सकते हैं. Join us and learn the ideas of बीज mantras. अब personal questions नहीं लूंगी. Anybody wants to ask anything regarding the workshop or know anything more generally, then you can ask. Thank you. Personal questions, please. Thank you. Ma'am, 1-to-1, how is there any procedure? Yeah, you can connect with Krishna. He will help you connect with me. He manages my calendar and events and everything. वो आपको सारा setting करा देगा. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot, madam. Thank you. I'm sorry, guys. 6-7 जने और हैं, but मेरे husband और मेरा बेटा आ गया. मुझे उनको dinner serve करना है. No, go ahead. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. That was a wonderful class. Thank you, ji. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you. Bye-bye, everybody. Good evening. Good night. Take care. Thank you. Thank you, ma'am. Good night. Thank you. Good night.